Gangsters, Vijay Singh and Dharmin Parekh. On the other end, the marquee players for Team Blasters, Sushil Patil and Gautam Parekh. And to do the honors of the toss, we have with us Shailesh Bhai Shah and Ajay Bhai. I'll request both the captains to please get at the center of the toss. I'll request all the team members to please get at the center pitch. The players of both the teams, we already have the two captains. And to do the honors of the toss of this very important match, we've got with us two fantastic members of the Goregaon Sports Club, very enthused and always ready to support any outdoor sports activity, Shailesh Bhai Shah and Ajay Bhai. Yeah, this is the second league match for both the teams, Team Gangsters. Blasters yet to open their account on the points table. So very crucial match for both the teams. Yeah, total of 6 matches to be played by each and every team in this round robin league format. This event has really got off to a great start. The standard of cricket has been superb. Most of the matches have been absolutely close matches going right down to the wire. And the match should be a very interesting one as we've got two balanced outfits pitted against each other. We've got both the captains in all readiness, Amol Polke and Amar Jain. A warm round of applause for both the captains, wishing them the very best. A good game. To flip the coin, it's going to be Shailesh Bhai Shah. Who's going to take the call? Amarkant will take the call. Here we go. Heads is the call from Happy. We'll have to wait and watch. It is tails. Amol, you've won the toss, and what have you decided? So we will try the other part. We'll field first this time, and let's see how it goes. We have been seeing that the initial first half is bit tricky, so we'll try and exploit that conditions as such. You almost went past the winning line in the earlier match, but unfortunately could not end up the winning team. So this becomes a crucial match for your team. You've got a very good outfit. Yeah, actually, it's the other day it was not our day, but our team did very well with the batting and bowling. There were some lapses. We'll try and not to repeat those mistakes. We'll improve each game here on. We'll see how it goes. All the best. Happy you come into this match with a win behind your back, so that much confidence more in your under your belt. Not exactly. Hello. Yeah, we'd love to take each match as it comes. Yeah, it definitely gives us a regards to that you have 2 points on the board. But we know that we are playing a considered side. Arguably one of the best teams, like how we played the first match, they were the best bowling side, this is the best balance. So so each of us know each other's strengths and weaknesses. So we are hoping for a great game of cricket. Thank you. It's the very best.
One with a thumbs up. Ganpati Bappa. Everybody will stand with their caps and hats off for the national anthem. Rashtrageet. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की. Yes, the match will start at 7 p.m. on the dot. The umpires will take charge of the ground at 5 minutes to 7 with the new white ball. Thank you. Join the community of more than Hey. Hey, check one. Hey, 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 check. Hey, 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 check one. 1, 2.
Hello. Hello, check. हेलो। इस मैच के टॉस को जीता है टीम ब्लास्टर्स ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। चलिए ब्लास्टर्स के प्लेइंग 11 के साथ आप सभी को रूबरू कराता हूं। कप्तान अमोल पोलके, अमित देसाई, प्रमोद कश्यप, दिनेश यादव, मार्की प्लेयर सुशील पाटिल, मार्की प्लेयर नंबर 2 गौतम पारिक, किशोर जेठवानी, अमित मेहरोत्रा, कृपेश, निखिल पटेल और अनिल जैन। 12th मैन रितेश मुंद्रा और 13th मैन सचिन पोलके। दैट वाज द प्लेइंग 11 ऑफ टीम ब्लास्टर्स। अब टीम गैंगस्टर्स के प्लेइंग 11 के साथ आप सभी को वाकिफ कराता हूं। कप्तान अमरकांत जैन, अविनाश कौशिक मेहता, गौरांग, विजय सिंह, धर्मिन पारिक, वैभव बगाड़े, शैलेश चाड़वा, सुधीर अंचन, प्रसाद करकेरा और जगदीश बिसावा। 12th मैन जयेश राडिया और 13th मैन सुमेश देवरा। इस मैच के टॉस को जीता है टीम ब्लास्टर्स ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। आज के दिन इस मैच के लिए दोनों ही हमारे अंपायरिंग ऑफिशियल्स योगेश कांबले और प्रशांत दुबे, दोनों ही अंपायर्स को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि उन्हें आज एक अच्छा मैच प्राप्त हो। यह मैच ठीक 7 बजे ऑन द डॉट शुरू होगा। मैं दोनों ही अंपायर से निवेदन करता हूं कि आप सेंटर पिच पे जाए। नई गेंद बिल्कुल रेडी है। Yeah, for Team Blasters, Sachin Polke is not the 13th man. It is in fact Rajesh Agarwal. Thank you. I'll request both the teams to please make one extra player available in the com box so that we can note down the names and call out their names to perfection. We need one extra player from both the cams to be stationed in the com box. Thank you. Yes, there you can see on screen the white lady absolutely ready. The umpire is all set, snatching the white ball away. This should be a good match. Team Blasters versus Team Gangsters. Gangsters have won the first match. They have got those 2 points on the board. In spite of playing a fantastic game of cricket, Team Blasters could not go past the winning post in the earlier match. But this is a long tournament. Each team gets to play at least 6 round-robin league matches. So you always have got that chance to make a comeback. These are early days, lots of cricket left to be played in this GSC45 plus T20 league. Team Blasters, as the captain of Team Gangsters, Amarkant, mentioned that Team Blasters is indeed one of the best balanced teams in at the GSC45 plus league, and I'm sure they will put their best foot forward today to play an excellent brand of cricket. Yes, wishing both the teams the very best, and may the best team win at the end of the day. Led by the very smart cricketer, a very accomplished wicketkeeper batsman, Amol Polke, who also bowls brilliantly if the need be. On the other hand, Amol Polke's counterpart, Amarkant Jain, Urf Happy, a very endearing personality, such a great sportsman. Very, very experienced. He will always provide that soothing effect in the camp of Team Gangsters. Have a feeling that he's just about the right guy to lead the team. Yes, 2 good teams up against each other. This really should be a mouth-watering contest. Team Blasters versus Team Gangsters. Team Blasters, having won the toss, have decided to field first. They've invited the opening pair of Team Gangsters to take first strike. In the meantime, I would like to thank our title sponsor. First up, the Lakshmi Group
passion for excellence. Big thank you to Praveen Bhai Kothari. Thank you to our co-sponsors, RBL Bank, Kesri, Pari Group Builders and Developers, Edelweiss Insurance Broking, K. Talsania Construction. Their tagline is Rising Boundless. Gajjar Group since 1948, Pimalaya Resort and Spa, Hex, and ISO 9001 company. Big thank you to all our sponsors. Without the support of all our sponsors, this event would not have been such a great event. And we look forward towards their continuous support and patronage. Yes, I'll request the captain of the fielding team, Amol Polke, to please set his field, and both the batsmen need to walk onto the center pitch. We need to bowl the first ball in the next 1 minute. We already passed 7 p.m. Good evening, Satish Agarwal sir. विवेक भाई नरसरिया का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. Yes, Karan Singh Walia sir is already here. Good evening, gentlemen, and a warm welcome. All set for this match to get started. Yes, Subbu Bhai will have that much more responsibility on his shoulders today, as one of his partners is playing the game, Pramod Kashyap. So it will be Subbu Bhai to coordinate everything in the comm box and the technical box. The two umpires in all readiness. Amol Polke, having won the toss, has decided to bowl first. And the opening pair of team Gangsters just about ready to get onto the center pitch. The opening pair of Shailesh and Avinash Mainkar walking onto the center pitch. Yes, a big thank you to both the teams for coming on time, going through their warm-up session, exhibiting a good brand of discipline. We are just about to get the match started on the dot. Once again, wishing both the teams the very best. May the best team win at the end of the day. This is the second match in this league format for both the teams. Team Blasters playing their second match will be more than keen to put their first points on the table. On the other hand, Team Gangsters have already won a very tight match and will approach this match with that much more confidence. A long way to go, still early days. Round Robin League format makes every team play 6 matches in this tournament. This is the second match for both the teams. Long way to go. Difficult to predict anything at this stage. All I can say is that this tournament has been off to a great start. We've had many players registered for this event. The auction was an absolute blockbuster event. A big thank you to the management of this tournament for making sure that the teams were absolutely well balanced. Almost difficult to pick any favorite team in this tournament. गेंदबाजी का भार संभाले हुए प्रमोद कश्यप नई गेंद के साथ स्ट्राइक पर अविनाश मयंकर और उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शैलेश. इसके पहले के मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी. नई गेंद के साथ बिल्कुल शरारत कराई थी प्रमोद ने. नई गेंद के साथ 2 विकेट्स हासिल किए थे. देखना कि आज किस तरह से शुरू करते. फुल लेंथ डिलीवरी ड्राइव किया अविनाश ने कॉपी बुक स्टाइल में. वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद. पहली गेंद पर सीधा ऑफ द मार्क अविनाश. शैलेश पहली बार इस मैच में स्ट्राइक पर सामना करेंगे प्रमोद का. धीरे धीरे अपनी लय को प्राप्त करने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ते हुए यहां पर प्रमोद. चलिए शैलेश का प्रोफाइल स्क्रीन पर प्ले करते हैं. I am Shailesh Chadwa, right hand batsman and a right hand bowler. शैलेश छाड़वा.
द मैन ऑन स्ट्राइक अविनाश। नई गेंद के साथ बिल्कुल तैयार प्रमोद। थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को जाने दिया अविनाश ने। नई गेंद का सटीक इस्तेमाल करना होगा प्रमोद ने। अच्छी गेंद वहां पर बीट हुए। चलिए अविनाश मैनकर को हम स्क्रीन पर दर्शाते हैं। Hi, I am Avinash. I am right-hand batsman and right-hand bowler. चलिए 45 प्लस प्लेयर्स, जबरदस्त अनुभव। अच्छी गेंद, जैसे ही दो लूजनर्स शुरुआत में किए, अब अपने लय को प्राप्त करते हुए देखे किस तरह का अब प्रोफाउंड फॉलो थ्रू वहां पर प्रमोद दर्शाते हुए। पहली दो गेंद पर इतना लंबा फॉलो थ्रू नहीं था, अब रिदम में आ चुके। पहली दो गेंद लूजनेस थी। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों ही टीम्स के लिए। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है, ये तो बस अब शुरुआत है। अच्छी गेंद, आज आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने का मन बनाया है प्रमोद ने। अच्छी लाइन को स्ट्राइक किया है। एक सटीक ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 2 रन बिना कोई नुकसान के। और अब मार्की प्लेयर नंबर 1, एक बेहतरीन प्लेयर, एक चट्टान जैसा प्लेयर सुशील पाटिल अब कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर शैलेश। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 रन बिना कोई नुकसान के। पहले से मन बनाया था कि बड़ा शॉट में खेलूंगा, ऑन द राइज प्रहार किया है। 3 फील्डर्स गेंद के पीछे वहां पर दौड़े थे, वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई। इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, उसके बावजूद पहला चौका मिला। वहां पर रन संख्या बढ़कर अब 6 रनों पर। गेंद इतनी खराब नहीं थी, बिल्कुल लेंथ डिलीवरी थी। ऑन द राइज आक्रामक शॉट लगाया, वहां पर शैलेश ने 4 रन्स प्राप्त हुए। इसके पहले के गेंद पे भी पहले ही 2 कदम आगे आए थे शैलेश। चलिए, शैलेश ने ये बिल्कुल संकेत दिया है कि आक्रामक खेलेंगे। दूसरी तरफ सुशील एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी गेंदबाज है, आइकॉन प्लेयर नंबर 1 है अपनी टीम के लिए। इतना आसान नहीं होगा सुशील को स्टेप आउट होकर खेलना। उस पहले विकेट की खोज में सुशील पाटिल, स्ट्राइक पर शैलेश। अच्छी शुरुआत शैलेश को प्राप्त हुई है। यस, बेहतरीन शॉट, वहां पर कोई मौका नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज बिल्कुल ये संकेत छाती ठोक कर देते हुए कि मैं बिल्कुल आक्रामक खेलने वाला हूं, विस्फोटक खेलने वाला हूं। और एक चौका शैलेश के बल्ले से निकलता हुआ। रन संख्या बड़ी तेज रफ्तार से डबल डिजिट्स में जा पहुंची है, 10 रन बिना कोई नुकसान के। इस बीच हमारे फाउंडर मेंबर के जैन साहब का हम तहे दिल से स्वागत करते। गुड इवनिंग सर। यस,
Shailesh making his intentions absolutely clear that he's not going to take things lying down. He's going to grab the initiative and go for the bowling. Looks like this is the strategy that they have really come up with, the team Gangsters. A good piece of thinking there. Amol Polke keeping close in. Well kept, well bowled. See, this is what you really call flexible thinking. You cannot be rigid. Amol saw that he was stepping out to play most of the deliveries, decided to put the pressure on him. Oh, well played, superbly timed. This is an altogether different Shailesh. He really does mean business today. Very focused, ready to take that risk to play the big shots. Until this time, the gamble is paying rich dividends for Team Gangsters. The third boundary in the over takes the score to a very handsome 14 for no loss. Making fantastic use of the power play restriction. Nicely played. Goodness me, this is unorthodox cricket at its best. Wow, what a shot. This is brilliant batting. This has really taken everybody by surprise, this approach from Shailesh. Very refreshing, and the gamble that he's taking is really paying off. The score at the end of 2 overs, 18. That over went for 16 runs, 4 boundaries to the blade of Shailesh in that over. So he's already on to 17 runs of just 7 balls. This is one of the best starts in the tournament. We are into the 5th day. This is the best start that any team has had. And now it's going to be Pramod to bowl to Avinash. Bowling in that corridor of uncertainty, Pramod. Yeah, Pramod Kashyap really could turn out to be the find of the tournament. He's been really practicing hard. He's working on his game. He's working on his fitness. Nicely bowled and well played as well. Sensible batting by Avinash. And when your opening partner is in that kind of a mood, you really would be wanting to give most of the strike to him. What unorthodox batting. He has manufactured a couple of fantastic shots of the bowling of Sushil. Super batting, an absolute delight to watch at this stage, Shailesh. This is some food for thought for Amol Polke. He's being tested, no doubt about it. अपील थी काफी ठीक ठाक अपील ही थी, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं जताई वहां पर योगेश ने, अंपायर। महफूज, कोई खतरा नहीं। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। This is a good start here for Team Gangsters after having been put into bat, having lost the toss. And especially Shailesh seems to be in an attacking mood. .
Well bowled and well kept as well. Pramod is bowling a brilliant line. He's striking just around that off stump. Yes, he's got that knack of obtaining some late swing, Pramod. Growing in confidence, growing in stature, Pramod Kashyap. Once again bowling a good spell for his team. Nicely driven, a man at wide-ish, a piece of misfielding there. We'll have to wait and watch whether they go for the third run. Indeed, they will go one for the throw. So 3 runs added. Yes, team Blasters have won the toss, elected to bowl first. They'll have to play a tight brand of cricket. Yes, they have to tighten the screws here, team Blasters. The score at the end of 3 overs is 23 for no loss. सुशील पाटिल अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे. बहुत ही अनुभवी गेंदबाज और अपनी टीम की आन बान और शान सुशील पाटिल, इस बात में कोई संदेह नहीं है. तो एक वापसी करना चाहेंगे. पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए. बहुत ही अच्छी गेंद. ये बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ है. जिस तरह से स्ट्रोक्स लगाए उस पहले ओवर में सुशील के, शैलेश ने थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ होगा और वापसी करना चाहेंगे. यही एक हॉलमार्क होता है चैंपियन प्लेयर के लिए, वापसी करना किसी भी स्थिति में. बहुत ही आला प्लेयर है सुशील. अच्छी बैटिंग, एक लंबा स्ट्राइड फॉरवर्ड लिया. थोड़ी सी मिसफील्डिंग, जबरदस्त थ्रो, वहां पर फ्लैट थ्रो था. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. क्या बात है. यानी ना केवल शॉट्स लगाते हुए सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज दर्शाते हुए, बल्कि टीम गैंगस्टर्स रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी सेंस ऑफ अर्जेंसी दर्शाते हुए. ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाज इस इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे, मेरे ख्याल से जो भी नर्वसनेस थी कैंप में गैंगस्टर्स की, वो नर्वसनेस हवा हो चुकी है और एक आत्मविश्वास भरा माहौल इस वक्त गैंगस्टर्स के खेमे में. बाहरी किनारा लेकर गेंद वाइडिश गली में बड़ी तेज रफ्तार से गई. अच्छी फील्डिंग, वहां पर छलांग लगाई. बेहतरीन फील्डिंग, 100% एफर्ट. और इसी तरह की एफर्ट लगानी होगी. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है टीम ब्लास्टर्स के लिए. पहला मैच हारा है, ये दूसरा मैच है. अमोल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की है, तो सभी फील्डर्स ने 100% अपने गेंदबाजों को बैक करना होगा. थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड शॉट मिस कर गए वहां पर शैलेश. रन संख्या थमी हुई 26 रनों पर. इस ओवर में और 3 गेंदबाजी बाकी है. 2 गेंदबाजी बाकी है. सुशील गेंदबाजी करेंगे शैलेश को. आक्रामक रवैया इख्तियार किए हुए शैलेश बिल्कुल विस्फोटक खेलते हुए.
चेंज इन पेस, गेंद बीट हुए वहां पर बल्लेबाज भाग्यशाली रहे। अच्छी वापसी करते हुए सुशील, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज इस तरह की स्थिति में से कई मर्तबा गुजर चुके हैं और किस तरह से इस स्थिति में अपनी गेम को संवारना, सजाना और आगे बढ़ना, ये भली भांति जानते हैं सुशील। लेकिन एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला इस वक्त मार्गस, बेहतरीन मैच। एक गेंद आनी बाकी है पावर प्ले पीरियड की, ये आखिरी गेंद। पहले पावर प्ले पीरियड में आप केवल 2 ही फील्डर्स को इनर सर्कल के बाहर आप तैनात कर सकते हैं और इस बात का आज काफी फायदा उठाया है विशेष रूप में शैलेश ने। अविनाश ज्यादातर वी में खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वो ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव उनका पेट शॉट है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 28 रन बिना कोई नुकसान के। इससे बेहतरीन शुरुआत क्या मिल पाती टीम गैंगस्टर्स को। बहुत ही अच्छी शुरुआत। वापसी करनी होगी आज अमोल और उसकी पूरी थिंक टैंक के लिए एक कड़ी परीक्षा होगी। गेंदबाजी में अब कृपेश को इंट्रोड्यूस किया गया है। पावर प्ले पीरियड खत्म हो चुका है। दूसरा पावर प्ले 10 ओवर्स के बाद बल्लेबाज सिलेक्ट करते हैं और उस पावर प्ले में आपको 3 प्लेयर्स इनर सर्कल के बाहर रखने की परमिशन मिलती है। जैसे ही कोई भी बल्लेबाज 36 गेंदों का सामना कर लेगा उसे रिटायर होना होगा। जो भी गेंदबाज 4 विकेट्स ले लेगा उसका स्पेल वहीं पे खत्म होगा। लेकिन अगर ओवर में कोई गेंद बाकी है तो उस ओवर को भी बिल्कुल समाप्त कर पाएगा वो गेंदबाज। 5 ओवर्स एक एंड से कम 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल अनिवार्य है। 4 ओवर्स फेंक सकते हैं। कुल मिला के 24 मैचेस हम खेलेंगे इस टूर्नामेंट में, 2 सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फिनाले को इंक्लूड करते हुए। 8 मई को ग्रैंड फिनाले। 45 प्लस क्रिकेट का ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर 4था संस्करण। बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट एनुअल कैलेंडर इवेंट है। काफी महीनों से सभी 45 प्लस प्लेयर्स इस टूर्नामेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल दिशा दी वहां पर अविनाश ने। पहले ही गेंद पर 1 रन लिया। कृपेश वाकई में अपनी टीम के लिए हुक्मी इक्का है। जिस तरह से बड़ी धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, सट्टी गेंदबाजी करते हैं, तो एक खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी कृपेश। डाउन द लेग साइड बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था शैलेश ने, मिस करके वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा। रन संख्या उस 1 रन के साथ 30 रनों पर। एक अच्छी नींव रखते हुए शैलेश और अविनाश। बहुत ही बड़ी अपील की थी वहां पर, लेकिन कोई भी इंप्रेशन नहीं कर पाए अंपायर पर। बेनिफिट ऑफ डाउट विल ऑलवेज गो टू द बैट्समैन, वोंट इट? काफी धीमी गति से गेंद को टॉस कराया था, ड्राइव किया वहां पर शैलेश ने। 1 रन की बढ़त। वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई शैलेश और अविनाश के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत। उस पहले विकेट की खोज में टीम ब्लास्टर्स के लिए कृपेश मैच के टॉस को जीता था। अमोल पोलके ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। This will be a test of character for Amol and the think tank.
A very, very experienced captain, such a brilliant player, Amol, such a good head over his shoulders. I am sure that he will really be right up to this test. No better man than Amol to lead the team. All the teams are so well balanced, difficult to pick any favorite at this stage. This time a faster one. That was an interesting appeal. Never judge the book by its cover. This is what somebody like Hemal Dave the other day proved to all of us. Never judge the book by its cover. This is what Krupesh keeps on telling us always. Very tight bowler, always wants to be in the game, Krupesh. Very smart cricketer. Yes, this match really promises to go right down to the wire. It's a great start, a superb contest between bat and ball at this stage. Two fine teams up against each other. Nicely driven. Yeah, playing with a straight bat. This is brilliant running. Pramod slightly late to react. One extra run up on the board. A couple easily taken. The score at the end of 5 overs is 35 for no loss. Yes, team Gangsters will be more than happy with the start. All wickets in hand. The run rate 7 and over. Playing with so much of confidence. Both these batsmen are almost meeting each and every ball with the meat of the blade. Connecting the delivery so well, picking up the gaps. Yes, indeed, the team Blasters is a very balanced team, one of the best balanced teams in the whole format. Dinesh Yadav from the far end now, the new bowler being introduced, one of the key stays for team Blasters, Dinesh Yadav. Hugely experienced, lots and lots of variations up his sleeve, very intelligent bowler. Dinesh Yadav, a very fit man, good stamina, works on his fitness. He's got a lean physique, so that really helps his bowling and his fitness. Yes, one of the very favorite players at the Goregaon Sports Club, Dinesh Yadav. Indeed, a great character. The man on strike, Shailesh. अच्छी गेंद सीधे सीधा इनटू द बिजनेस दिनेश यादव. यही लाइन और लेंथ के लिए दिनेश यादव को इतनी ख्याति प्राप्त है. किसी भी तरह से कोई वार्म अप की आवश्यकता नहीं है. सीधे सीधा लाइन एंड लेंथ पर हर वक्त हर पल. बहुत ही कम मर्तबा आप दिनेश को थोड़ी सी इधर उधर गेंदबाजी करते हुए देखोगे. बहुत ही टाइट गेंदबाजी करते. आज का दिन 5वां दिन टीम गैंगस्टर्स, सुपरस्टार्स, चैलेंजर्स और वॉरियर्स, ये 4 टीम्स है जिन्होंने अपने मैचेस को जीते हैं. पहले मैच में गैंगस्टर्स के लिए वैभव बगाड़े ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया था. 27 रन्स बनाए थे, 3 विकेट्स हासिल किए थे. वैभव बगाड़े ने आज देखना है कि किस तरह का करिश्मा कर दिखाते हैं. वैभव शायद उस इनिंग्स के चलते आज प्रमोशन जरूर मिलेगा, क्योंकि शुरुआत भी इतनी अच्छी हुई है. तो वैभव विल
be up for a promotion. Looks like it. टीम सुपरस्टार्स के लिए अनिल दुग्गर दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे, हाफ सेंचुरी और 2 विकेट। चैलेंजर्स के लिए हेमल दवे ने 45 रन्स बनाए थे, 2 विकेट्स भी लिए थे। और कल टीम वॉरियर्स के लिए सुनील देवली ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्राप्त किया। सुनील देवली ने 43 रन्स नॉट आउट की एक लाजवाब इनिंग्स खेली। तो ये 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर्स। गत 4 मैचेस के आज ये 5वां मैच है, 5वां दिन है। दोनों ही टीम्स अपना दूसरा मैच खेलती हुई। दिनेश यादव एक बहुत ही मंजे हुए गेंदबाज। यस, जिस विकेट की खोज में थे उस विकेट को प्राप्त किया है। शैलेश जो खतरनाक नजर आ रहे थे पेविलियन में वापस आते हुए। मैंने पहले ही कहा था कि ये गेंदबाज बहुत ही चतुर गेंदबाज है। चलिए हम चेक करेंगे उस गेंद की लीगैलिटी को, देखते हैं। यस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चेंज वहां पर अमोल पोलके ने इफेक्ट किया। दिनेश यादव को गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मेरे ख्याल में जिस भूमिका को असाइन की गई थी शैलेश के कंधों पर, उस भूमिका को काफी अच्छी तरह से निभाई। एक अच्छी इनिंग्स खेलकर पेविलियन में वापस एक अच्छी शुरुआत दिलाने में बिल्कुल कामयाब रहे शैलेश। अमोल पोलके ने एक अच्छा रनिंग कैच लिया। गौरांग अब नंबर 3 के पोजीशन पर आते हुए। टीम गैंगस्टर्स के विकेट कीपर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बहुत ही सक्षम बल्लेबाज। एक अच्छी विकेट दिलाई है वहां पर दिनेश ने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त होती हुई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉलिंग लाइनअप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है दिनेश यादव। अच्छी गेंद और गौरांग ने अच्छी तरह से उस गेंद को खेला। पहले गेंद पर सीधे सीधा ऑफ द मार्क गौरांग। चलिए हम थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, काफी समय मिला अविनाश को के कट करे पॉइंट के दिशा में, 1 रन की बढ़त। चलिए गौरांग का प्रोफाइल हम स्क्रीन पर प्ले करते हैं। Hi, I'm Gaurang. I'm a wicket keeper and a right-hand batsman. गौरांग करकासिया। गौरांग के कंधों पर आज एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर टैलेंट्स, गेट अमंग्स द रन्स, मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, get into that confident mode in this tournament. Slightly awkwardly played, but no harm done. But indeed well bowled by Dinesh. Dinesh is really testing the batsman with his guile. Very intelligent bowler. Just look at the ideal pace with which Dinesh is bowling. Yes, a successful over for Dinesh, having taken a wicket in that over. He gave away just 3 runs in the first over. This spell from Dinesh will be very, very crucial, but somebody will have to give very good company to Dinesh, because Dinesh gets to bowl just 4 overs in this innings. So at least 2 to 3 bowlers have to bowl brilliantly to make sure that team Blasters stays in contention. The pressure needs to be applied from both the ends.
दोनों एंड से दबाव बनाए रखना है। कृपेश अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे फार एंड की तरफ से। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है कृपेश और ज्यादातर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा टर्न नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जो उनकी लैंडिंग है वो बहुत ही आला है। शॉर्ट गेंद कट कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन टाइमिंग थी, गैप पिक नहीं कर पाए, लेकिन आत्मविश्वास भरा शॉट। गौरांग के पास बिल्कुल 360 डिग्रीज के शॉट्स है। थोड़ी सी लूज गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, गैप में नहीं खेल पाए अविनाश। 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव किया डाउनटाउन, डीप मिड ऑफ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग कर गए प्रोमो। जब भी कृपेश आगे की तरफ गेंद को डालते तब खतरनाक साबित होते हैं। कभी कभार फास्टर वन करने की कोशिश में शॉर्ट गेंदबाजी करते हैं। जब आगे की तरफ गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज वो कश्मकश में होता है कि मैं आगे खेलूं या पीछे खेलूं, और उस वक्त सबसे खतरनाक नजर आते हैं कृपेश। 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हल्के हाथों से खेला, वहां पर बड़ी आसानी से रन मुकम्मल किया। ड्रिंक्स इंटरवल होगा, पहला ड्रिंक्स इंटरवल 7 ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल 6 रन की रन रेट के साथ अग्रसर होते हुए टीम गैंगस्टर्स ने 42 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े किए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर एक वापसी की है इस मैच में टीम ब्लास्टर्स ने। इस मैच के टॉस को जीतकर टीम ब्लास्टर्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और जब पहला ड्रिंक्स इंटरवल यहां पर शुरू हुआ है तो एक बहुत ही समांतर स्थिति में इस मैच को हम सभी पाते हुए, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है और इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल।
चलिए फिर से एक बार आप सभी को वापस वेलकम करता हूँ। ड्रिंक्स इंटरवल के पश्चात का खेल बस अब शुरू होता हुआ। अगर थोड़ा सा विश्लेषण मुझे उस पीरियड का करना होगा, ड्रिंक्स इंटरवल के पहले के पीरियड का, तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में इनिशिएटिव ग्रैब किया था शैलेश की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते टीम गैंगस्टर्स ने, लेकिन गत 2 या 3 ओवर्स में एक वापसी की है और ये मैच अब पहले ड्रिंक्स इंटरवल के बाद बिल्कुल एक समांतर स्थिति में द मैच इवन स्टीवंस अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे। दिनेश यादव फार एंड की तरफ से, स्ट्राइक पर अविनाश। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रमोद की। अमोल पोलके ने वो बैकवर्ड फ्लिप लगाया था जिसको फेमस किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। हेलो, बहुत ही अच्छी गेंद, ये बिल्कुल सटीक लेंथ है और बहुत ही बढ़िया लाइन भी। अगर ये टप्पा लगातार डालते रहेंगे तो मेरे ख्याल से किसी भी बल्लेबाज को किसी भी लेवल पर चुनौती पेश कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा धीमी गति से उस गेंद को किया था, काफी टर्न होती हुई गेंद। बहुत ही ज्यादा समय मिला गौरांग को के बैकफुट पर जाकर कट करे। वो स्क्वायर कट उनका फेवरेट शॉट है गौरांग का। और एक विकेट गिरा। दिनेश यादव को इस तरह के रिस्की शॉट्स खेलना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है। दूसरा विकेट प्राप्त किया है, दूसरी सफलता। चलिए हम चेक करेंगे फुट नो बॉल के लिए। बिल्कुल परफेक्ट गेंद, कोई दिक्कत नहीं। अविनाश पेविलियन में वापस आते हुए और बिल्कुल 4 नंबर की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हुए अमरकांत। अच्छी वापसी की है यहां पर टीम ब्लास्टर्स ने। जैसे ही दिनेश यादव को गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया, हलचल मची है। चलिए हम अमरकांत जैन उर्फ हैप्पी को स्क्रीन पर दर्शाते हैं। Hi, I am Happy Urf Amarkant Jain, right hand batsman and right hand bowler. Yes, indeed, very experienced player, great utility player, a fantastic bowler, keeps things tight, a very handy batsman, reads the match situation to perfection. That is the best part of his game, that he reads the match situation to a nicety. Well bowled and nicely played, getting that long foot forward, smothering whatever spin there was in that delivery, opening the face of the bat at the last moment, straight to the man at the point region, straight away off the mark. Happy with that single, the score on to 45. 45 for 2. We are into the 8th over, the final ball to come in this over. Nicely worked away towards the wideish mid-wicket region. A single easily taken. End of the 8th over. The score is
46 for 2. यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, ना केवल यूट्यूब बल्कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये 45 प्लस क्रिकेट टूर्नामेंट कुल मिला के 24 दिन चलेगी। आज का ये 5वां दिन। 7 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट के चलते हर टीम को कम से कम 6 मैचेस खेलने का अवसर प्राप्त होगा। टीम ब्लास्टर्स और टीम गैंगस्टर्स दोनों ही ने एक एक मैच खेला है। दोनों के लिए आज ये दूसरा मैच है। गेंदबाजी में अब कृपेश अपने स्पेल को बरकरार रखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कृपेश ने आज दबाव बनाए रखा है। हालांकि दोनों विकेट्स दिनेश को मिले, लेकिन दबाव बनाने में बिल्कुल सफल रहे हैं कृपेश। स्ट्राइक पर हैप्पी। थोड़ा सा अजीब और गरीब शॉट क्रॉस बैट के साथ खेला था। खूबसूरत ड्राइव, वहां पर गेंद चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर निकली, वहां पर चौका मिला। बेहतरीन शॉट, अच्छी टाइमिंग था। उस चौके के साथ रन संख्या 51 रनों पर 50 रन्स अप ऑन द बोर्ड फॉर टीम गैंगस्टर्स। डॉट गेंद अच्छी वापसी करते हुए 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग्स का 9वां ओवर मार्गस्त। कृपेश सामना करते हुए हैप्पी। अच्छी गेंद, बड़ी धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए लेंथ एरिया में अपनी गेंदों को लगातार लैंड करते हुए कृपेश। बिल्कुल एक रेगुलेशन कैच था। मेरे ख्याल में आंख बंद करके भी उस कैच को ले सकते थे। मौका टपकाया वहां पर कृपेश ने। ज्यादातर फॉलो थ्रू में इस तरह के कैचेस नहीं छूटते हैं। लाइफ मिलती हुई वहां पर हैप्पी को थोड़ा सा जल्दी खेल लिया अपने शॉट को ही। नोज इट। बहुत ही जरूरी है कि ये दोनों ही बल्लेबाज अब कम से कम 36 गेंद खेलने की मंशा करे, और यही मंसूबा होना मांगता है इस वक्त। दोनों ही बल्लेबाज गौरांग और हैप्पी दोनों को ही 36 गेंद का जो उन्हें कोटा प्राप्त है वो खेलना जरूरी है। कृपेश ने अब तक 3 ओवर्स की है और अपने 3 ओवर्स में केवल 16 रन से दी है। गिविंग अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ कृपेश, जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफी यूजफुल गेंदबाज है, एक अहम कड़ी है कृपेश। कृपेश जैसे गेंदबाज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पिछली खेला था, लेकिन T20 में उस पोजीशन पर शायद ही कभी कोई फील्डर खड़ा होता है। कोई खतरा नहीं। गौरांग को आज एक बहुत ही अहम भूमिका निभानी है। गौरांग कराकासिया, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देते हुए, तकनीक पर तवज्जो देते हुए, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेला है।
थोड़ी सी तेज गति से दिनेश ने उस गेंद को फेंका था। काफी समय मिला हैप्पी को कि टर्न करे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन के साथ। रन संख्या 53 रन। गौरांग ने अब तक केवल 10 गेंदों का सामना किया है। एक अच्छा कारपेट ड्राइव डीप पॉइंट के क्षेत्र में केवल 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या थमी हुई 54 रनों पर। 2 गेंद आनी बाकी, 1 गेंद आनी बाकी। मिस की थी लाइन। हैप्पी ने वहां पर बैकफुट पर गेंद लगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट दिनेश के लिए, तीसरी सफलता। बहुत ही जरूरी था कि दिनेश को ऐसे हालात में कोई और विकेट न दे। चलिए हम डिलीवरी की लीगैलिटी सबसे पहले तो चेक करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट डिलीवरी। वो विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि हैप्पी इस तरह की सिचुएशन में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नए बल्लेबाज मार्की प्लेयर नंबर 2 अपनी टीम के लिए धर्मीन पारेख। चलिए धर्मीन पारेख का प्लेयर प्रोफाइल स्क्रीन पर दर्शाते हैं। Hi, I'm Baba, right arm off spinner and right-handed batsman. धर्मीन पारेख बिल्कुल एक हरफन मौला खिलाड़ी, जबरदस्त जोश के साथ अपने क्रिकेट को खेलते, बहुत ही ज्यादा पैशनेट क्रिकेटर है। क्रिकेट फील्ड से आप धर्मीन पारेख को लंबा नहीं रख सकते। जो जीएससी ओपन लीग हुई थी उसमें भी उनका समावेश था और मेरे ख्याल में 1 या 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया था। तो ये बिल्कुल बनता है कि इस तरह के 45 प्लस क्रिकेट में मार्की प्लेयर बने। विजय सिंह के साथ धर्मीन पारेख टीम गैंगस्टर्स के लिए आइकॉन प्लेयर्स के रूप में है। वैभव बगाड़े, विजय सिंह, ये सभी बल्लेबाज आने बाकी है। तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है टीम गैंगस्टर्स के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी टीम में कम से कम 2 बल्लेबाजों ने कम से कम 36 गेंद खेलना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाके आप विनिंग पोजीशन में आओगे। ये मूल मंत्र इस तरह के फॉर्मेट में यही है कि अगर आपको मैच को जीतना है तो कम से कम 2 गेंदबाजों को 2 या 3 विकेट्स लेने हैं, या बल्लेबाजों की बात करें तो कम से कम 2 बल्लेबाजों को 36 गेंदों का कोटा खेलना अनिवार्य होता है। तगड़ा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। वो डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लगातार टारगेट करते गौरांग। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं।
धर्मीन पारिक स्ट्राइक पर, बाबा। आज ये मौका है कि बतौर बल्लेबाज भी अपनी काबिलियत दर्शा सके। अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेला बाबा ने। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं। क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट पिकअप शॉट देयर, स्टैंड एंड डिलीवर बाबा। कितना एफर्टलेस शॉट था, कितना एफर्टलेस। नजाकत से खेला उस शॉट को, वहां पर प्रमोद मौजूद, मिस कर गए। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकली। 2 लगातार चौके बाबा के बल्ले से। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। उन 2 चौके के चलते फिर से एक बार थोड़ा सा शोरगुल होता हुआ टीम गैंगस्टर्स के खेमे में। हेलो, अपनी रेंज ऑफ शॉट्स को दर्शाते हुए बाबा। अच्छा ड्राइव, एक अच्छी शुरुआत धर्मीन पारिक के लिए। उस 1 रन के साथ रन संख्या 64 रनों पर। ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.91। इस 5.91 के रन रेट को इनिंग्स की समाप्ति तक कम से कम 8 रन के घर में ले जाना चाहेंगे टीम गैंगस्टर्स। कृपेश के 4 ओवर्स का स्पेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर्स में 27 रन दिए। वो आखिरी ओवर 11 रनों के लिए वहां पर गया। गेंदबाजी करेंगे अब अमित देसाई। एक बहुत ही क्रूशियल मोड पर गेंदबाजी करने के लिए अब उतरे हैं अमित। स्ट्राइक पर गौरांग। मोड़ दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन प्राप्त हुआ। 66 रन। स्ट्राइक पर अब बाबा। बाबा ने अब तक केवल 4 गेंदों का सामना किया है। 2 चौके लगाते हुए 9 रन बना ली है बाबा ने। चलिए, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। बहुत ही सटीक बल्लेबाजी करते हुए धर्मीन पारिक। और इसी तरह से अगले 15 मिनटों तक बने रहना होगा धर्मीन पारिक को विकेट पर। वाइडिश गली पर वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन की बढ़त, लगातार सिंगल्स के सहारे अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में टीम गैंगस्टर्स। 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सम्मानजनक करंट रन रेट। चेंज इन पेस। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं कि दूसरा रन लेने की सोचे भी।
69 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग्स का 12वां ओवर मार्गस्थ गेंदबाजी करते हुए अमित देसाई। स्ट्राइक पर अब गौरांग ने अब तक 15 गेंदों का सामना किया है और मेरे ख्याल में आज गौरांग के पास एक जबरदस्त मौका है कि पूरी 36 गेंदों का कोटा खेल ले। एक अच्छा रेंज ऑफ शॉट्स है गौरांग के पास और जिस तरह से बाबा ने अपने इनिंग्स की शुरुआत की है, मेरे ख्याल से उस इनिंग्स बाबा की उस इनिंग्स के चलते काफी आत्मविश्वास बड़ा होगा गौरांग के लिए भी। इतनी मजबूत अपील नहीं थी। बेहतरीन कट शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर किशोर जेठवानी की। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था किशोर जेठवानी ने पहले मैच में और आज भी एक क्रूशियल भूमिका निभानी होगी किशोर को। 12 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 5.83। कम से कम 150 रन्स बनाना बिल्कुल चाहेंगे टीम गैंगस्टर्स और जैसे ही मैंने कहा कि एक अहम भूमिका निभानी होगी। कप्तान ने गेंद थमाई है किशोर को। अमोल पोलके अपनी रिसोर्सेस को काफी अच्छी तरह से रोटेट करते हुए थिंक टैंक अब आपस में सलाह मशवरा करती हुई अमोल पोलके, दिनेश यादव, सुशील पाटिल, ये मेरे ख्याल से थिंक टैंक के टीम ब्लास्टर्स की। तीन विकेट कीपर बैट्समैन बतौर कप्तान टीम्स का नेतृत्व करते हुए आज खेलते हुए अमोल पोलके और दूसरे है हेमंत मोहिते और तीसरे जीवन राय। ये तीन विकेट कीपर बैट्समैन बतौर कप्तान अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए किशोर जेठवानी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर गौरांग अब तक 17 गेंदों का सामना किया है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था, शायद थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड शॉट होने की संभावना थी, लेकिन बहुत ही सटीक लेंथ पर उस गेंद को फेंका था किशोर ने। बहुत ही अहम भूमिका निभानी है जेठवानी को। थोड़ी सी बिलेटेड अपील थी, लेग बाइस के रूप में एक रन वहां पर प्राप्त हुआ। चलिए तीन दिग्गज प्लेयर्स आते हुए, विपुल कल्याणी, राकेश सुवर्णा, पराग शाह, तीनों ही प्लेयर्स का मैं स्वागत करता हूं। विपुल who had a fantastic match yesterday, Rakesh Suvarna has had a good stint. Parag yet to go all out. Welcome to all the three players. Yes, slowly but steadily all the players coming onto the ground to watch the proceedings. अच्छी गेंदबाजी किशोर की, बहुत ही ज्यादा सक्षम प्लेयर है, काफी काबिलियत है, जबरदस्त हुनर है। मेरे ख्याल से ये प्लेयर इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स हो सकता है, किशोर जेठवानी।
He's got that potential. He just needs to deliver. He's had a good first match. And if he gets going, could really impress one and all. A very capable player, Kishore. Change in pace, slightly outside the off stump. And is been adjudged to run out. Baba will not be happy. He was looking good at the wicket. He was looking so much focused. He was determined to play a good innings. Unfortunately, will have to take that sorry walk back to the pavilion, courtesy being run out. Good throw from Pramod. Just the kind of wicket that team Blasters was looking forward to, because he was looking good at the wicket, wasn't he, Baba? Prasad Karkera now, the new man in. Prasad to replace Baba. यस, चलिए प्रसाद करकेरा को स्क्रीन पे लाते हैं. Hi, my name is Prasad Karkera. I'm a right-handed batsman and a right-arm fast bowler. बहुत ही enthusiastic cricketer, लगातार प्रैक्टिस करते, इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट, और बहुत सारे दोस्त भी है प्रसाद के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में. फुल लेंथ डिलीवरी, और नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल एक सटीक गेंद है. जब आप किसी नए बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं तो आपका मुख्य हेतु यही होना चाहिए कि आप सीधे सीधा उसे खेलने पे मजबूर करें. आपने एक स्पेल में एक अच्छी शुरुआत हासिल होती हुई किशोर. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज प्रसाद. बहुत ज्यादा वाइड, बिल्कुल सही निर्णय. अंपायर प्रशांत दुबे. मेरे ख्याल से प्रशांत दुबे के लिए इस टूर्नामेंट में ये पहला मैच है. थोड़ा सा फोकस खोया. गेंद को बिल्कुल सटीक एरिया में लैंड कराना यह बहुत ही जरूरी है T20 गेम में. कट कर दिया, तगड़ा शॉट, गैप भी बेहतरीन तरीके से वहां पर हासिल हुआ है. अच्छी फील्डिंग वहां पर. इसके पहले के गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में वापस आए. बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया. 13 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट अब 6.15. अगले ओवर में ड्रिंक्स होंगे. अमिन देसाई अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे. स्ट्राइक पर अब होंगे गौरांग. चार विकेट्स गिर चुके हैं. इसके पहले के मैच में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्राप्त किया था, वैभव बगाड़े, अब भी खेलना बाकी है. विजय सिंह भी अब तक बैटिंग लाइनअप में शेष है.
तो ये बिल्कुल जाहिर होता हुआ कि एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है टीम गैंगस्टर्स के लिए. दे बैट प्रीटी डीप डाउन द ऑर्डर. खड़े खड़े खेला वहां पर, कलाई के सहारे मोड़ दिया वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में. 1 रन मिला. रन संख्या 81 रन. अमित गेंदबाजी करेंगे अब नए बल्लेबाज प्रसाद को. कट कर दिया. अच्छी टाइमिंग. पंच किया है. ना केवल बेहतरीन टाइमिंग बल्कि बिल्कुल अव्वल दर्जे की प्लेसमेंट, जिसके चलते चौका प्राप्त हुआ. आज के दिन का पहला चौका प्रसाद करकेरा के लिए. उस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर अब 85 रनों पर. That kind of a shot will infuse so much of confidence into Prasad. That was a fantastic connection, exquisite timing and super placement as well. 4 precious runs added. Down the leg side, a good leave, should be a wide one. Yes, quite the right call. 1 extra run up added to the tally with that wide run. The score now on to 86. Runs coming in thick and fast now. The ball keeping slightly low, nicely negotiating that low bounce, bringing his bat down in quick time. Good hand-eye coordination. 87 for 4. Trying to fetch it from outside the off stump, but not such a good timing. Nevertheless, played towards the mid-wicket region. A single easily taken. 88 for 4. That current run rate has now gone up to 6.44 and over. They're exhibiting a sense of urgency in our team, Gangsters. बहुत ही अच्छी गेंद. बिल्कुल बल्लेबाज को क्रैम्प किया. किसी भी तरह से कोई मौका नहीं दिया कि अपने आर्म्स को फ्रीज करे. बड़े शॉट्स लगाए स्क्वायर ऑफ द विकेट. सटीक गेंद. थोड़ी सी धीमी गति से उस गेंद को किया था, रफ्तार में परिवर्तन किया था. 14 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर सेकेंड ड्रिंक्स इंटरवल.
Yes, so welcome back. The score at the end of 14 overs is 89 for 4. The current run rate 6.36 and over. The final 6 overs to come now. Kishore to bowl from the commentary box and the man on strike, Prasad. Prasad is off to a good start here. The power play over. I think the batsmen need to switch. Prasad will be on strike, umpires. Kishore Jetwani to continue the second over of his spell. And yes, thank you. It's going to be Prasad on strike. The power play period has already been opted for by the batsman. 2 overs power play, and you get to station not more than 3 players outside the circle. Yes. Down the leg side. Kishore is indeed a fine bowler, but to be effective, he'll have to make sure that he does not concede those wide deliveries. He has to be careful. Nicely struck, taking advantage of the power play restrictions. Today it has indeed been a confident looking Prasad Karkera. Prasad has indeed exhibited a sense of urgency right from the word go. He's already on to 14 runs of 7 balls with the help of 2 boundaries. The strike rate 200%. A very confident looking shot, taking advantage of the fielding restrictions imposed courtesy that power play period. Yes, this is good batting by Prasad, the confident looking Prasad. He's looking more focused. He's looking determined today. The bail's off in a jiffy. Gaurang not able to put bat to ball. But yes, Prasad seems to be very focused. He's made up his mind to play a substantial innings. He's looking confident. Once again misses a line. And 95 for 4. 2 balls to come in this 15th over. This is the power play period opted by these 2 batsmen. Well bowled, change in pace. Turned away round the corner. 1 run added in the form of a leg by. Score moves on to 96. The final ball to come in this 15th over from Kishore, man on strike, Prasad. Low full toss, Pishri played. That was an intentional chip shot. And this is fantastic running between the wickets by Gaurang.
Good thinking. Each and every run is absolutely vital in this kind of a scenario. Smart running score at the end of 15 overs, 98 for 4. The current run rate 6.53 and over, 6 wickets in hand and 5 more overs to negotiate. Yes, Sudhir Anchan going on to the ground with the drinks. He had a vital role to play the other day. And he is in the playing 11 today as well. Sudhir Anchan's yet to bat. We've got Vaibhav Bagade, Vijay Singh, Sudhir Anchan yet to come. Kaushik Mehta. Yes, remains to be seen who now comes on to bowl. Looks like the ball has already been handed over to Pramod Kashyap to bowl from the far end. Yeah, this is the power play over, the final power play over. So you get to station not more than 3 fielders outside the inner circle. The man on strike, Gaurang, has already faced 25 balls just for 15 runs. Yes. पटकी हुई गेंद क्रॉस बैट के साथ डीप मिड ऑन के क्षेत्र में उस शॉट को खेला गौरांग ने. उस 1 रन के साथ रन संख्या 99 रनों पर 1 रन दूर ट्रिपल फिगर मार्क से. अच्छी बैटिंग, करीबन हर गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अच्छी गेंद पर भी सिंगल्स लेते हुए प्रसाद. उस 1 रन के साथ 100 रन नजर आते हुए टीम गैंगस्टर्स के लिए एक अच्छी रन रेट के साथ आगे बढ़ती हुई टीम गैंगस्टर्स. एक रन वहां पर बड़ी आसानी से लिया. उस 1 रन के साथ रन संख्या 101 रनों पर. ब्लॉक होल में फेंकी गई गेंद थोड़ा सा लो फुल टॉस था, बिल्कुल ब्लॉक होल में नहीं थी. थोड़ी मिसफील्डिंग और 1 रन चुरा लिया, एक्स्ट्रा रन. नजर हटी, दुर्घटना घटी. रन संख्या 103 रनों पर. एक 1 रन शॉट का इशारा, केवल 1 ही रन प्राप्त होगा. स्ट्राइक पर प्रसाद. के बाद रन संख्या 107 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. आखिरी 24 गेंद आनी बाकी. करंट रन रेट 6.4
6-9, 6.69 the current run rate. It has to go up in the region of at least 8 runs, around 8. दिनेश यादव जिन्होंने अब तक 3 विकेट्स लिए हैं, बेहतरीन स्पेल किया है टीम ब्लास्टर्स के लिए। अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर अब तक 3 ओवर्स में केवल 10 रन दिए हैं, 3 महत्वपूर्ण विकेट्स लिए हैं। देखना है कि अब प्रसाद विशेष रूप में किस तरह से अप्रोच करते दिनेश यादव की गेंदबाजी को। सेट हो चुके हैं प्रसाद और काफी सूझबूझ के साथ खेलते हुए, बिल्कुल मैच सिचुएशन को अच्छी तरह से उन्होंने समझा है और बिल्कुल सटीक बल्लेबाजी करते हुए। चले सीधे सीधा चौथा विकेट मिला वहां पर। बैकफुट पर खेलना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है। बड़ा खामियाजा भुगता वहां पर प्रसाद ने, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रसाद। लीगैलिटी चेक करेंगे। चलिए अभी गो, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी इनिंग से खेलकर वापस आते हुए प्रसाद अब मेरे ख्याल में बिल्कुल वैभव बगाड़े तैयार। यस, अंदर आते हुए करण भाई जो कि कौशिक भाई के साथ टीम ओनर है, चीयर अप करते हुए सभी प्लेयर्स के लिए। ये महत्वपूर्ण मैच है और गैंगस्टर्स के खेमे में काफी अच्छी संख्या, काफी ज्यादा सपोर्टर्स आज यहां पर मौजूद है। चलिए वैभव का हम प्रोफाइल स्क्रीन पर प्ले करते हैं। Hi, I'm Vaibhav. I'm right-handed batsman and right-hand bowler. Right-hand batsman, right-arm bowler, दोनों ही डिपार्टमेंट में पहले मैच में इंप्रेस किया। 27 रन्स, पर्पसफुल रन्स बनाए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला और 3 महत्वपूर्ण विकेट्स भी उस दिन वैभव ने लिए, जिसके चलते मैन ऑफ द मैच का खिताब वैभव को इस टूर्नामेंट की ओपनिंग मैच में प्राप्त हुआ। और आज भी एक अहम भूमिका निभानी होगी वैभव बगाड़े को। एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छे फॉर्म को बरकरार रखना होगा। ये एक लंबे अरसे तक चलने वाला टूर्नामेंट है। इतिहास को भूलकर अब नया इतिहास रचना होगा। तो यू हैव टू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड एंड यू गॉट टू फोकस ऑन व्हाट इज ऑन योर हैंड्स। बहुत ही जरूरी है कि वी सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द अर्लियर मैचेस, स्पेशली इन राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट। Straight away off the mark, this is what confidence can do to you. When you've got that fantastic innings earlier in the event under your belt, you approach that new innings with relative ease. And nicely turned away around the corner. Gaurang has faced till this point in time 28 balls for his 22 runs with the help of just one boundary. 29 balls till this point, 29 balls. Just 7 more balls to come in this innings of Gaurang. He has held the fort. He's held one end up. No, says Gaurang. Vaibhav at
One point in time, he was looking for the second. In the end, decided against it. 110 for 5. Dinesh Yadav is the only successful bowler for Team Blasters. 5 wickets down, 1 courtesy a run out, and the remaining all 4 wickets in the kitty of Dinesh Yadav. What a spell. Brilliant spell. Not so well timed. Yes, the format of this event really will make Dinesh Yadav retire after this over. In any case, this is the last over of his spell. So does not make any difference of any sort to the game dynamics. Remain the same. One more wicket. There you go. Fifer. A fifer to the credit of Dinesh Yadav. Goodness me, what a spell. 5 wickets to... Yes, that's a legal delivery. We have checked. The new man in Vaibhav Singh. Vaibhav is out and Vijay is walking onto the wicket. Beg your pardon. Yes, one of the star players, Vijay Singh. Very experienced, very workaholic. A fantastic all-rounder, icon player number 1 for Team Gangsters, Vijay Singh. Yes, let's get Vijay Singh on screen. Hi, I am Vijay Singh, right-hand batsman, right-hand medium pace bowler. The final 18 balls to come in this innings of Team Gangsters, 111 for 6. 6 wickets down, 1 wicket was courtesy the run out, and the rest 5 wickets in the kitty of Dinesh Yadav. What a spell, dream spell, goodness me, a one-man army. His 4 overs have gone for just 14 runs and he's taken a fifer. Will be a big challenge to better this analysis. I doubt whether anyone can do better than this. I really doubt. Sushil to bowl from the far end. Clean ball him. You miss, I hit. Wickets are starting to fall like 9 pins here for Team Gangsters. We'll check the legality of the delivery. Here we go. No problems on that count. Warm welcome, Jivan Bhai. Happy man with that victory yesterday, Jivan Rai. Sudhir Anchan, the new man in. Yes, the other day he played so sensibly, Sudhir Anchan. His team was in a big spot of bother. He was making his debut in the 45 plus and he played a good hand. Yes, can we have Sudhir on screen? Hi, I'm Sudhir Anchan. I'm a right-hand batsman and a right-hand bowler. Prefer to field on the covers. Wow, prefers to field in the cover. Good all-round player. Sudhir Anchan, he had a good match the other day. A total team man, 100% is what can be expected of him at all times. Trying to turn it away around the corner. We'll have to wait for the umpire's decision. A piece of misfielding and Sudhir will not miss that opportunity to scamper home for that second one. 113 in the form of 2 leg byes. $113 for 7.
16 balls to come, the final 16 balls. Nicely played, Livy, starting from where he left the other day, Sudhir Anchan. $114 for 7. We enter the 18th over. 3 balls to come in this over. A total of 15 balls to come in this innings of Team Gangsters. Trying to bowl in the block hole. Nicely worked away by Vijay Singh. Smart running between the wickets by Sudhir Anchan. Yes, Sudhir Anchan starting from where he left the other day. What a man to have in your team. A great utility player, Sudhir Anchan. A very street smart cricketer. Being street smart is very, very important in this kind of a T20 scenario. You got to read the game. You got to be street smart. Vijay has got the strength to go out of the park. He's got that power. And at this stage, he's the only man who can send the ball out of the park. Trying to essay a cover drive on the rise. Misses the line, Anchan. End of a successful over from Patil. Score at the end of 18 overs, 117 for 7. The final 12 balls to come now. The current run rate 6.5. Ideally, Karan Bhai and his team would want at least something in the region of 150. You need to touch 150. Yes, just once again a reminder for the Sports Injury Management Seminar on coming Sunday, 10th of April, sharp 9:30 a.m. only for the members of Goregaon Sports Club. Seminar on sports injury, sports management, sports rehabilitation. Sports injury rehabilitation conducted by Dr. Ali Irani, former physiotherapist of the Indian cricket team, now associated with the Nanavati Hospital. You got to register yourself for the seminar. Promo from the far end with that single 118. Pramod Kashyap has till this point in time given away only 16 runs. This is the final over of his spell, quite tidy. Trying to bowl into the block hole, low full toss, turned away around the corner. Vijay was never looking to go for that second run. Though Pramod Kashyap has not been amongst the wickets today, he's bowled reasonably tidy. It's been a useful spell. Will be bowling to Vijay Singh, the final 10 balls to come. 119. That current run rate hovering in the region of 6.5. Very well bowled, good thinking. Pramod is indeed turning out to be a very tight seam bowler, one of the better seam bowlers. Of late, he's been working on his game and he's a very determined player. Into the pads, we'll have to wait and watch for the umpire's signal. Yes, that one added in the form of a leg bite takes the score to 120 for 7. The final
8 balls to come now. The final 2 balls in this spell from Pramod. They have been quite tidy today, Team Blasters. They have succeeded in tightening the noose around the batsmen of Team Gangsters. That spell from Dinesh Yadav was indeed the defining moment of this match. Really could be the difference between victory and defeat here. That spell from Dinesh, that fifer from Dinesh. It would be a huge ask to better that bowling analysis of Dinesh Yadav. End of the penultimate over, the score at the end of 19 overs, 121 for 7. Vijay Singh was desperate to keep the strike to himself. Yes, still 6 more balls to come, and it's going to be the marquee player number 1, Sushil Patil, to bowl from the far end. Apart from that, a very expensive first over that he bowled, wherein he was struck for 4 boundaries by Shailesh. Otherwise, he's been quite tidy. Shailesh really gave him some stick in the first over. 17 runs were given away of that first over from Sushil. Of those 17 runs, 16 runs to Shailesh. Yes, the plan was to take a single and give the strike back to Vijay. What will Vijay do now? He's got the potential, he's got the talent, he's got the power, he's got the temperament to do it. Vijay Singh is not known for his running between the wickets, but he had to go for that second run if he had to keep the strike to himself. Yes, 2 icon players up against each other. The respective number 1 icon players for their teams. Sushil for Team Blasters and Vijay Singh for Gangsters. So 2 good players up against each other. The final 4 balls to come now. 124 for 7. They've really done a good job to tie this batting lineup of Team Gangsters. The good effort by Promo. At the edge of the circle, at the extra cover region. Just a single added, 125. The final 3 balls to come. They were really eyeing that 150 run mark minimum. And nicely driven on the rise. The final 2 balls to come, 126 for 7. This is good bowling under pressure by Sushil. A hugely experienced bowler. Change in pace, he had to fetch it from outside the off stump. Good timing and a fantastic catch by Dinesh Yadav once again into the thick of action. Goodness me. We'll check the legality of the delivery. Yes, no problem on that count. Vijay Singh back in the hut. The final ball to come now in a very good state of affairs, Team Blasters. Definitely at least 18 to 20 runs short, have a feeling at this stage, Team Gangsters. Chaliye, 126 for 8. The final ball to come. Kaushik Mehta, the owner, alongside Karan Bhai. Yes, Mayura.
Clean bowled him. Polishing of the innings here with his brilliant bowling, Sushil. 127 runs to win this match. The target for... Yes, we'll check the legality. That's a job that we always got to do. Yes, as I was mentioning about that wonderful sports injury and sports injury rehabilitation seminar to be conducted on the 10th of April, that is the coming Sunday, from 9:30 in the morning till 5:30 in the morning, in the evening. 230 people have already registered. Wow. 230 registrations have already taken place. This is your last opportunity, especially for the 45 plus cricketers, if they need to prolong their career, if they need to stay connected with the game, if they need to add some healthy years to their life. I think you should be a part of that seminar. So go for it. Yes, thank you to both the umpires, Yogesh and Prashant. 127 to win this one. I'm sure Karan Bhai would feel that maybe they are 15 to 18 runs short maybe. But yes, 20 runs short definitely. And it will be Karan Bhai to take charge of the mic during the... Okay. He's not up to it today. Yes, kya baat hai. Just presenting a warm welcome to our guest. Quite a few family members of Happy have come in to cheer Happy and the team. Dr. Aditi Jain from all the way from Canada. Rajiv Bhai Jain all the way from Dubai is here to cheer Happy. Wayne Jain all the way from Canada. They all are life members of Goregaon Sports Club, and it's great to have you here. Good evening and a warm welcome. And I think it's going to be Jeevan Rai and Mayura for a chit-chat during the mid-innings break. And I'm sure that Mayura will not put any questions rotating around Happy.
Good evening, GSE. Today I'm here in a very new role. Usually they give me the job of asking questions and giving out gifts, but today it's an honor and a privilege to ask questions to the winning captain of yesterday's amazing match, Jeevan Rai. Jeevan Rai is here with us, captain of Warriors. Hi. Hi, thank you. So Jeevan, tell us something about yesterday's match. How did you feel? What was your strategy? What led you to that win? Winning always makes you feel great, obviously, but I would definitely say that we had great team from our side. We had great, strong opponent too. Somewhere their plans failed. Sam bowled really well. Take and Mukhtar actually started off so well that we thought we can wrap them up in about 60 to 80 runs. Then we had That's amazing. I saw the match. So I think the audience couldn't hear the last portion, so if you can just repeat. I'll talk about the way we unfolded the victory. Taken Mukhtar as opening bowlers, they ensured that we restrict the superstars to a very small score. And post that, Vipul Kalyani, Dada, NK wrapped up the bowling side really well. Even Manoj Thanvi. And finally, on the batting side, Ashish, Rishibai, Dada, NK, they all put up a real good score that we could wrap up the innings in about 13 overs. Sam, I would say, was exceptionally good bowler in their end. They were a very strong team, obviously. Some plans fail sometimes, and that's about it. The better team wins, but overall the cricket wins. That's very well said. Now today's match, we were all thinking that Gangsters will reach to 150 score, but they've ended up making only 127, which is actually 23 runs short of what they would like to go to the ideal win. So what would your advice be for Happy? Happy. I played a lot of cricket with him, and he's got amazing temperament, talent. They have a real strong bunch of people there. Though the score looks low, but I think it's going to be difficult for anybody against Gangsters to achieve that. Having said that, Amol's team, really very powerful team, very well played. Some time back, I had played a game called Temple Run. I saw Dinesh Yadav doing a wicket run today, and he would not stop at all. So if you were Amol today, Amol Polke, the captain of Blasters, if you were Amol today, what would your strategy be to take this team to the win? I think temperament is what will win the game today at both the ends. And 120 plus is not a small score, not a big score, defendable, achievable. The best team will win, and like I said, cricket would win. Thank you very much, Jeevan. For all the viewers who are watching on YouTube, please keep your comments, likes, and shares coming. Our players do watch the comments after that, and it really helps them, it encourages them. People who are sitting at home, come here. There are a lot of gifts to be won, prizes to be won. And come, let's enjoy cricket together. All the best to Blasters and Gangsters. Thank you. Over to the commentary box.
Hello. Yes, John T ready with the new ball. The umpire's all set, and it's going to be Yogesh Kamble to take that white ball away to get this second half started. Yes, 127 runs to win the match. The target for Team Blasters, having won the toss and opting to field first. They did a reasonably good job to tie this long and deep batting order of Team Gangsters to just 126 runs. But yes, mind you, they'll have to play some good cricket to get there. The first 5 overs will really be the key here for either team. Both the teams will be wanting to start this second half with a game-winning effort. Not a mountain to climb, but definitely, as Jeevan Rai mentioned, that the total is not too low, nor is it too high. So it's not here nor there, and those kind of matches can be dangerous. And the opening pair of Nikhil and Gautam walking onto the wicket. 127 runs to win this. Nikhil Patel and Gautam Parikh. Chile, can we have Nikhil's profile on screen first up? Hi, I'm Nick Patel, right arm batsman and a 12th man fielder. Oh, wow, what a statement, 12th man fielder. Nick Patel, yes, very enthusiastic. चलिए अब गौतम को स्क्रीन पर पेश करते हैं. Hi, I'm Gautam Parikh, right-handed batsman, right-arm slow bowler. Yes, definitely the opening partnership from Nick and Gautam will really be the key. Nikhil Patel, a very enthusiastic player. He really loves the game. He loves to be a part of the think tank, always up for coming up with the good plans. Strategizing is one of his USP. Always involved in most of the cricket tournaments, not just as a player, as an owner, as a supporter, always in the scheme of things, Nick Patel. It's going to be Gautam on strike and Nick who is batting with a runner at the non-striker's end. 127 runs to win this one. And looks like once again in this match, it's going to be the captain happy to operate with the new ball. Yes, so with happy opening the bowling, you can be assured of the ball at most times landing in the right areas. Doesn't try and bowl too fast. Very reliable with his line and length. Really likes to keep the ball in the right places. He gets that late movement as well. Very experienced. And his primary job at this stage will not be to just make life miserable for Nick and Gautam. His primary job will be to take a couple of quick wickets with the new ball. In this kind of a situation wherein you are defending a smallish target, you need to be right up there. You need to make this new ball count, don't you? This is where the experience of Happy can really be invaluable. And when you're defending a smallish target, you really need to give a lot of thought to the kind of field that you set. And once you set your field, you got to bowl to your field. That really is the key. In this kind of a scenario, each and every run conceded could really be the difference between key and victory. It's been a fantastic start to the event. Most of the matches have been quite tight because the teams are so evenly balanced. It's very, very difficult to pick any favorite team at this stage. They all are so good. But I think the team that plays the smartest in this 45 plus will be the champion team. And when I say playing smart, it means how you rotate your bench strength, how you conserve your energy.
You should know when to go full throttle, when to hold yourself back, when to bowl a wicket-taking line, when to bowl a containing line and length. This is what you got to read. This is where the think tank role comes into play. Yes, 127 to win this match. The man on strike, Gautam. Happy to Gautam. Here we go. It's play time. Slightly short, a good connection, but not wanting to take any unnecessary risk. Because he had played that ball on the back foot, that would have taken an extra effort for Gautam to go off the blocks. And that is exactly why he said no. Good thought, good thinking. Nicely played, slightly short, a very rare sight from Happy. Generally is very good with the new ball. He likes to pitch the ball further up, and whenever you bowl the ball further up, you give the ball that extra chance to swing here or there. Yes, that's the length you want to be bowling. The moment he bowled a fuller length, immediately the batsman was in some kind of a trouble. A very accomplished batsman, one of the key links in the batting lineup of team Blasters, Gautam. Nicely bowled, well played. Nicely punched away, piece of misfielding, the ball racing towards the sweeper point region, a couple easily taken. Yes, as far as the fielding is concerned, you have to back your bowlers to the hilt. This is not a huge target that you're defending, it's a smallish target and you really need to give more than 10% in the field. Well bowled, pitching on and around that off stump, leaving the batsman just a wee bit. Yes, starting to get into the groove, Happy, testing the batsman with his movement, making good use of this new ball. Managing to take that outer edge of the bat of Gaurang, nicely bowled, is starting to get some good shape on the ball. Happy. End of a tight over. A reasonably good start here for Happy. Score at the end of the first over, 3 runs for the loss of no wickets. 127 to win this one. And yes, as was expected, the old warhorse, one of the finest seamers on the scene, Vijay Singh, about to bowl from the commentary box. And the man on strike, once again, is going to be Gaurang. Gautam, yes. Gautam facing Vijay. Yes, this game has all the makings of going right down to the wire. Starts off with the wide. He releases the ball so beautifully, Vijay. Loads and loads of experience, a giant player, a big match player. Very well bowled, getting some late movement through with his shot a little early. Gautam.
Yes, after quite some time, Nick coming on strike for the first time in this tournament. This is the first game for Nick facing Vijay. Yes, indeed, Gautam has got a wide range of shots, so his primary aim will be to play out those 36 balls. Not such a mountain to climb, so they have got this luxury to treat the bowling on merit for the first 3-4 overs. Though this is the power play period, compulsory power play period, I do not think that that power play period is at the back of the mind of both these batsmen at this stage. This is a huge opportunity for Nick to impress one and all with the bat. Yeah, you got to accept every challenge as an opportunity in this kind of a 45 plus format. This is your chance to impress one and all. Nicely played, good technique, right beneath his nose. With soft hands, nicely came into position, didn't he? Yes, indeed. Seems like a very good contest between bat and ball. The start has been just about perfect for both the teams. They are just playing a good brand of cricket, both teams. The team that handles the pressure better will really get a big chance to win this one. It's all down to your temperament. There was a chance, a good effort, but could not hold on to it. That was in his zone. वो shot बनता था. इस बात में कोई दो राय नहीं है. But could not get that right elevation. Yes, that will have to go down into my books as a missed opportunity. Wasn't an easy chance, but was a chance. No doubt about it. Catches win matches is what they keep saying. Nicely played, growing in confidence. I just have a feeling that Gautam Parikh really holds the key here. He needs to play out those 36 balls, because if both these batsmen get going, it will really cool the nerves in the camp of Team Blasters. That was a half-hearted shot, almost a nothing shot. Nick will have to be careful. The umpire had one good look at it. Prashant Dubey, his first match in this tournament. He's nicely coming on the top of the ball, right? So that is good technique, how you come into a good position, how you get onto the ball, how you play it with soft hands. Getting into the position is really the key. How you propel yourself to negotiate the delivery is the hallmark of a good player. Good players, champion players have always that extra second to play that shots. They come into position so quickly. So it's not just about the trigger movement. It's all about reading the length and the line of the delivery quite early. You got to pick it up quite early.
Nicely played, intentional, no harm whatsoever. 4 confident runs to the blade of Gautam. This is exactly the kind of shots that one would play during the power play period, making use of the fielding restrictions imposed. Can be just 2 men outside the circle in the first 4 overs, which is the compulsory power play period. Nicely played, this time towards the mid-on, a consecutive boundary. Taking the bull by its horns, Gautam starting to grab the initiative. He knows that this is the power play over, and if you're going to be bowling to Gautam in his zone, he's going to go after you. Two consecutive boundaries to Gautam takes the score to 15 away into the 3rd over. A reasonably good start here. All wickets in hand. 127 to win this match. Team Gangsters will have to keep picking up wickets at regular intervals. Gautam in a very positive frame of mind. He's faced 10 balls for his 13 runs with the help of 2 boundaries. He's looked to play with a positive intent. Nicely cut away. If the fielder had to collect the ball in the first go, maybe the batsman would have had to hurry to scamper home. That was slightly risky, but because of that slight misfield, the batsman home quite easily. But that singles go on to 16th. Nikhil on strike. That swinging low full toss turned away towards the point region for a single. The foundation is being laid. A good partnership being stitched here between Nikhil and Gautam. The seeds are sown for a good harvest. In the block hole. Nicely dug away. With that single, the score on to 18 for both the teams. This is the second league match. Courtesy the win in the first match, team Gangsters have those 2 crucial points in the kitty. The ball ricocheting off the pads into his stumps, and Nick on his way back. Just the wicket that they were looking forward to. Nikhil taking that long walk back to the hut. That ball was going down the leg side, but unfortunately for him it ricocheted off his pads into the stumps and he's got to come back. Yes, to replace Nick, it is Amit Desai. Chale, let's get Amit Desai on screen. Hi, I'm Amit Desai, right-hand batsman, right-arm bowler, and my favorite shot is straight drive. Yes, very cool and composed as he was while making those remarks. A man with a sound technique, good temperament, walking into bat at the crucial number 3 spot.
Yeah, he's just about the kind of batsman who can be the ideal foil to somebody like Gautam. Yes, 109 to win off 102 balls. 102 balls and 109 to win, and to continue his spell, it's going to be Vijay from the commentary box, and the man on strike, Gautam. Gautam has faced 12 balls for his 15. I'm sure both these batsmen will now be looking to play out those 36 balls. Yes, I mean the mool mantra for any team, for any top team should be that at least any two of the batsmen from the first 5 play out those 36 balls. And if 2 batsmen play those 36 balls, your team will in any case be in a winning position. If you're chasing, your team will get you towards that winning total. If you're batting first, those 2 knocks will take you to a winning position. So the strategy for any team is to make sure that 2 top order batsmen play out their quota of 36 balls. In the last edition, it was 30 balls, but this year 6 balls have been added to the quota of the batsman, and one gets to play 36 balls before retiring. What a shot. As I mentioned, Gautam really holds the key. He's playing so well, he's treating the bowling on merit. It's not just about going for the bowling, he's not manufacturing the shots, he's playing those shots that really are there. So this is such a good approach by Gautam, and he's got a wide range of shots. This is a confident start here for Gautam, just the kind of start that his team wanted from him. Slightly short in length, thudding into the pads, the ball running away towards the square leg region. The wicketkeeper himself went for that chase. With that one leg by, the score on to 23 for 1. We enter the 4th over. 127 to win this one. The required run rate is 6.24. The current run rate is 6.5. Very good call from Gautam. Whenever you play the short square of the wicket, it is always the call of the non-striker end. And when you play it in front of you in the V, then that call for the run has to be from the striking batsman. So good thinking by Gautam. Very well bowled. Starting to find his rhythm. Vijay, this is what Vijay is famous for, this kind of tight bowling. He's got quite a few variations up his sleeve. He's got that uncanny knack of getting the ball to move both ways. He also changes his pace. Straight into the hands of the man at mid-off, and that was Dharmin Parikh with the number 13 jersey. A crucial blow. A crucial blow there. Amit Desai back in the hut.
Yes, that ball was traveling because that was well struck. See, that was good timing, good connection, but could not keep the ball along the ground. And when you play a shot up pitch, there is always a chance for the ball to go to any fielder. Only one runner will be allowed for any batsman. The second batsman cannot take a runner. We already had given a runner to Nick. Yes, he's injured, so no problems. Yes, so we carry on. Get going, concentrate. Thank you. Amit Mehrotra, the new man, very passionate, always contributing towards the welfare of any sports activity at the Goregaon Sports Club in one way or the other. He's got his chance today. Yes, can we have Amit on screen, Amit Mehrotra? Hi, my name is Amit Mehrotra. I'm a right-arm medium fast bowler and a right-handed batsman. Quite a confident man, and even if he plays with half the confidence of what he mentioned, it will be a good contribution for his team. A very fine man, always helpful, supporting everybody. A total team man, Amit. This is his chance. Very well bowled, nicely played, and this is misfielding there by Kaushik Mehta. All the three were running, all the three. Even Amit Mehrotra was running. That happens. That has happened to us also. जो मानो वहां पर मेला लगा हुआ था, सभी लोग भाग रहे थे और वही दौड़ देखते हुए कौशिक मेहता मिस कर गए. चलिए, एक रन की बढ़त, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों ही न्यू बॉल बॉलर्स ने एक एक विकेट ली है. तो एक रीजनेबली गुड स्टार्ट. रन रेट काफी अच्छी है यहाँ पर टीम ब्लास्टर्स की, लेकिन दो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पेविलियन में वापस जा चुके. अब काफी ज्यादा दारोमदार अब गौतम के सक्षम कंधों पर निर्भर करता है. बहुत सारे बैट्समैन आने बाकी है और इस मैच के शुरुआत में ही हैप्पी ने बताया था कि अगर कोई एक टीम सबसे बेहतरीन तरीके से बैलेंस्ड है तो वो है टीम ब्लास्टर्स. चलिए, अब बल गेंदबाजी में उतारा है आइकॉन प्लेयर नंबर 2 धर्मेंद्र पारिक को. पावर प्ले का पीरियड खत्म हो चुका है जिसमें 24 रन्स बनाए हैं टीम ब्लास्टर्स ने 2 विकेट के नुकसान पर. निक और अमित, ये दो प्लेयर्स पेविलियन में वापस जा चुके हैं. 4 ओवर्स में टीम गैंगस्टर्स ने बनाए थे 28 रन. इस वक्त ब्लास्टर्स ने बनाए 24 रन, लेकिन ये कोई रन रेट इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगी. अगर 20 ओवर्स खेल लेते हैं तो एक बेहतरीन मौका होगा इस मैच को जीतने के लिए. दूसरी तरफ लगातार विकेटों को लेना होगा टीम गैंगस्टर्स ने. 2 विकेट ले ली है, दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने एक एक विकेट टपकाया है. बाबा गेंदबाजी करते हुए अब कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक पर अमित मेहरोत्रा. धर्मेंद्र टू अमित. थोड़ी सी शॉर्ट इन लेंथ गेंद
ड्राइव किया, वहां पर कट किया, माफ कीजिएगा, क्रॉस बैट के साथ अमित ने। अमित को बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ खेलना होगा, क्योंकि ये उनको एक अवसर प्राप्त हुआ है कि अपना स्थान बताने के लिए कि यस आई बिलोंग टू द टीम, ही इज अ गुड प्लेयर. So this is his chance to impress one and all and make a huge contribution towards the welfare of his team. So he got to accept this challenge as an opportunity, and Amit is a good player. Acha, okay. It's a case of brother up against brother. दोनों भाई आमने सामने. थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पर कौशिक की, लेकिन कोई ज्यादा खतरा नहीं, केवल 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा. बड़े भाई साहब छोटे भाई को गेंदबाजी कर रहे. Yes, we all are here to prove that age is only a number. Yes, no cricketer gets old till the time he keeps playing cricket. So do not stop playing cricket, or if you do not want to stop playing cricket, there is a seminar on sports injury management, rehabilitation, sports injury prevention on the coming Sunday on the 10th of April at 9:30 a.m. at Goregaon Sports Club, to be conducted by the noted physiotherapist from Nanavati Hospital, Dr. Ali Irani. On the back foot, a good length delivery. बहुत ही शातिर गेंदबाज है बाबा, बहुत ही ज्यादा अनुभव है उनके पास. बहुत ही अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देते हुए बैक टू द बॉलर खेला. बहुत ही अच्छे नजर आते हुए गौतम, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए. हल्की सी अपील, कोई दिलचस्पी नहीं जताई अंपायर ने. ओवर की समाप्ति, एक सटीक ओवर समाप्त हुआ. 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. रिक्वायर्ड रन रेट 6.67, करंट रन रेट 5.40. 3 ओवर्स के पहले रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट के नीचे था, और अब रिक्वायर्ड रन रेट करंट रेट के ऊपर चला गया है. लेकिन कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 127 रनों का लक्ष्य तय करना है. इस वक्त ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि अगले 4 ओवर्स 5 ओवर्स तक विकेट ना गिरे. 90 गेंदों में 100 रनों की दरकार. 5 ओवर 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट 5.40. रिक्वायर्ड रन रेट 6.67. मेहरोत्रा स्ट्राइक पर. सामना करेंगे वैभव का. वैभव बिल्कुल एक अहम कड़ी. इसके पहले के मैच में 3 महत्वपूर्ण विकेट्स लिए थे. बहुत ही ज्यादा फोकस्ड प्लेयर है, बहुत ज्यादा ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ खेलते. जब कभी वो क्रिकेट फील्ड पे उतरते तो बिल्कुल 100% एफर्ट लगाते हैं. काफी फिट भी है. देखिए, ये सभी प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं. जैसे ही ये क्रिकेट का अनाउंसमेंट हुआ करण भाई की तरफ से, सभी प्लेयर्स प्रैक्टिस में लगे. ऑक्शंस हुए. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के क्रिकेट गलियारों में केवल एक ही चर्चा है, 45 प्लस क्रिकेट, 45 प्लस क्रिकेट.
और अब तक पहले 4 दिनों में हमें बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। आज का ये 5वां दिन। वैभव ने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था, 27 रन्स बनाए थे और 3 महत्वपूर्ण विकेट्स अपने स्पेल में लिए थे। आज तो गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल कमाल कर दिखाया दिनेश यादव ने। दिनेश ने आज 5 विकेट्स लिए, फाइफर 4 ओवर्स में, और बहुत ही कम रन दिए। मेरे ख्याल में 14 या 16 रन सिर्फ दिए दिनेश यादव ने अपने 4 ओवर्स में, 16 रन। बेहतरीन स्पेल। इस स्पेल को पीछे डालना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी किसी भी गेंदबाज के लिए 5 विकेट्स को क्रॉस कर जाना। व्हाट अ स्पेल फ्रॉम दिनेश। एक समय ऐसा था कि पहले 6 विकेट्स में 1 विकेट रन आउट थी और 5 विकेट्स दिनेश ने लिए थे। अच्छी गेंद, देखिए किस तरह से टप्पा खा के उठी वहां पर। डेंजर स्पॉट पे से गेंद लिफ्ट हुई। ये क्रूशियल दौर होगा इस इनिंग्स में। ये स्पेल काफी निर्णायक होगा। एक अच्छी शुरुआत वैभव के लिए। ऑन द राइज खेला है, अच्छा शॉट। थोड़ा सा अपिशली खेला था लेकिन कोई खतरा नहीं, वहां पर चौका मिला। थोड़ी सी मिसफील्ड। नाखुश होंगे वैभव क्योंकि थोड़ा सा अपिशली खेला था लेकिन बहुत ही ज्यादा दूर था वैभव से। क्योंकि वैभव की अगर आप फॉलो थ्रू देखें तो जैसे ही गेंद को रिलीज करने के बाद तुरंत ही अपने लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, उस वजह से कोई भी मौका नहीं बना। 4 रन के साथ रन संख्या 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पे अमित मेहरोत्रा का ये पहला चौका। अब तक 4 गेंदों में 6 रन्स बना चुके हैं। रन रेट पर इस वक्त कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है टीम ब्लास्टर्स ने। रनर को वापस भेजा है और स्वयं रनिंग करेंगे अमित। क्लीन बोल्ड है, क्या बात है। द स्टंप इज अपरूटेड, बिल्कुल ग्राउंड के बाहर। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है वैभव। चलिए सबसे पहले तो गेंद की लीगैलिटी चेक करते। ऑन स्क्रीन देखिए रिप्ले। बिल्कुल सही गेंद, कोई दिक्कत नहीं। काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाकर बड़ी तेजी से अंदर से आई। क्लीन बोल्ड टीम बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है। मैच विनर वैभव बगाड़े पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त करते हुए। और जब इतने जल्दी स्पेल में अगर उनके हत्थे अगर सफलता चढ़ती है तो फिर एक अलग ही गेंदबाज नजर आएंगे। बिल्कुल अब रंगत में आके उजागर होकर गेंदबाजी करेंगे। चलिए अब स्वयं कप्तान अनमोल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। Can we have him on screen, Amol? Here we go. This is Amol Polke, right-handed batsman, right-handed bowler, and a specialist wicket keeper. What a package. Captaincy, wicket keeping, top order batting, bowling in crucial overs. So an all-round package. Definitely there must have been some fantastic bidding on him. But the most interesting remark, statement from any player has been from Nick Patel, opening batsman, 12th man fielder.
Yes, back to cricket, 31 for 3. Vaibhav tasting success in the very first over. Yeah, being one of the lead bowlers, he's got to set the ball rolling. He's got to take that initiative and try and picking up wickets. Nicely bowled, cramping the room for cramping the batsman for any room. Nicely played by Amol, getting on the top of the ball, playing the ball on his toes. Technically a very sound batsman. Indeed, a classic top order player, Amol. Getting some extra late movement. There you see he's trying to bowl a wicket, taking line and length. He's a confident looking man. That good start to the campaign, that man of the match award is doing wonders for him. After quite some time, Gautam has got the strike back to himself, so he'll have to refocus, he'll have to reorient. After quite some time, he's come on strike, so he'll have to talk to himself, gather his thoughts back. Nicely bowled and nicely played. Staying away from strike in a T20 game for quite some time can really upset your rhythm. Because he was going great guns, he was exhibiting great concentration. Now this man, Gautam, really holds the key here. Nicely played uppishly but intentional. The ball running away towards the deep mid-wicket region. A single added. Gautam has played 21 balls in his innings so far. 21 गेंदों का सामना किया है. Yes, it's going to be drinks after this over. The score at the end of 6 overs, 34 for 3. The match very delicately poised. Could be anybody's game. A smallish target. Yes. Because they are at least 20 runs short, they'll have to take Jagdish Bisawa from the far end. Yes, his body language suggests that he is a left-arm bowler. Such a good ball. The batsman was beaten all ends up, lock, stock and barrel. Fortunately for the team, no harm done. Missing the stumps by just 2 inches. Well bowled, superbly bowled. Just look at his length. The kind of action that he has, the kind of release that he projects, slightly difficult to pick him up. The ideal start, just about the perfect start, is looking good.
Full toss. Unfortunately, just for a single. There seems to be an interesting bowler. Looking forward to how he gets through with the spell. Very well bowled. The pitching is superb. The way he releases the ball so late. He's bowling with a slower pace. He's landing the ball in the right areas, not trying too many things. He's just trying to stick to his basics, and he's letting the wicket do the rest. So good start to the proceedings. A big onus on the shoulders of Jagdish. Rather very full. No man in that single saving position on the leg side. Everybody back. The score at this stage 38 for 3. One more ball to come in the 7th over from Jagdish. Yes, team nicely struck, but straight to the man in the deep. With that single, the score at the end of 7 overs is 39 for 3. The drinks trolley onto the ground. Team Gangsters were 38 for 1 at this stage. Yes, could be anybody's game. Interestingly poised. The team that handles the pressure better will have a big chance to win this one. He'll have to be cool and composed. Gautam Parekh. Chile, welcome back to the post-drinks interval session. The score at this stage, at the end of 7 overs, 39 for 3. Vaibhav to bowl his second over. He's already tasted success in the first over. This has been a good start to the campaign for Vaibhav, has impressed one and all. Nicely played.
uppishly flicked away. Man in the deep before the ball can come back. A couple easily taken. With that couple, the score now on to 41. 127 to win the required run rate, 6.70, and over the current run rate, 5.72. Has taken the height, but not the distance. We'll have to wait and watch. Nicely judged catch. That was well timed, but not well enough to go over the head of the man at deep mid-on, and that was Happy who took that catch. We'll check the legality of the ball. We'll check it. We'll check the foot no ball. There we go. Perfect. No chance whatsoever. And Gautam on his way back after a good innings. He scored 27 of 26 balls. He had 10 more balls to play, but unfortunately getting out slightly, maybe he was slightly tired. Not enough wills on the ball to go over the head of the man at deep mid-on. Straight down the throat of Happy. Yes, the new man in now, the icon player number 1, Sushil Patil. What a player. In the earlier match too, he played such a good innings. He bowled well. Today also he's picked up 2 wickets. Apart from that first over wherein he got some stick, he made a good comeback. And then he got 2 wickets as well towards the end of his spell, Sushil. Very, very experienced player. Today he's taken 3 wickets, Sushil. So a 5-off from Dinesh and 3 wickets from Sushil. So the 2 bowlers who have been amongst the ruins for team Gangsters, Dinesh and Patil. Deciding to come round the wicket to the left-handed batsman, Vaibhav. Very, very wide down the leg side. Good evening, Mandot bhai. Yes, वाकई में ये 45 प्लस एक बेहतरीन टूर्नामेंट है. थोड़ी सी गेंद नीची रही और वो एरिया बिल्कुल फेवरेट एरिया है. जब कभी सुशील बल्लेबाजी करते तो पॉइंट और वाइडिश गली में बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं. वो उनका फेवरेट एरिया. आखिरी वक्त पर कलाई के सहारे गेंद को टर्न करते पॉइंट की दिशा में. ये उनका फेवरेट एरिया, पॉइंट दिशा में अपने शॉट्स को खेलते हैं सुशील. 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है. रन संख्या 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. इस इनिंग्स का 8वां ओवर मार्कस और 3 गेंद आनी बाकी. 2 सफलताएं प्राप्त हुई है वैभव को अब तक. पहला विकेट क्लीन बोल्ड के रूप में वैभव को मिला और दूसरा विकेट कैच के रूप में. एक अच्छा कैच हैप्पी ने डीप मिड ऑन पर लिया अंडर प्रेशर. खूबसूरत कैच. तो सफल गेंदबाज वैभव गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर आइकॉन प्लेयर नंबर 1 सुशील पाटिल. बहुत ही कम समय हमें देखने को मिलता है कि जो गेंदबाज
राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करता है, वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ उसका फॉलो थ्रू खत्म होता है। बहुत ही कम मर्तबा ऐसा देखने को मिलता है। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, करारा जवाब दिया वहां पर। बेहतरीन जवाबी कार्रवाई की वहां पर सुशील ने। 4 रन मिले, 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इस 8वें ओवर में एक गेंदबाजी बाकी। थोड़े से नाखुश वैभव, लेकिन कहना होगा कि बहुत ही बढ़िया शॉट था। $50 runs up on the board for team Blasters। 8 ओवर की समाप्ति पे 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 6.42, करंट रन रेट 6.25। 77 गेंदों में 72 रनों की दरकार। 72 to win of 77 balls with 6 wickets in hand। The man on strike, Patil, remains to be seen who will be handed over the ball. Looks like it's going to be Baba. $72 balls and 77 runs to win this match. 4 wickets down, and a very, very good batting pair of Amol Polke and Sushil at the wicket. Yeah, this batting pair really holds the key. Both are dangerous players, very accomplished players, classic players, both these batsmen. Yes, Baba bringing all his experience into play, keeping things tight. That full toss ball, loose one, gets the treatment that it deserved. And Sushil is too good a bat to miss out on this kind of a loose ball. You have to be very tight when you're bowling to somebody like Sushil, because he can play the shots of good balls as well. And when you bowl a loose delivery, he is going to belt you away. With that boundary, the score now on to 54. 54 for 4. This is a very rare sight, Dharmin bowling a loose delivery, a full toss ball. Turning it away round the corner. Sushil is so accomplished that he will hardly play any dot balls. Yes, once again, just to let Happy know that he'll have to keep a keen eye on the watch, on the clock. 120 minutes to get through with your 20 overs. Amol, the man on strike, facing Baba.
Nicely worked away, turned around the corner. Nicely fielded by Kaushik Mehta. Yes, one of the owners for team Gangsters alongside Karan Bhai Walia. Nicely played. Kaushik Mehta had bowled a reasonably tidy spell in the first match. He had got a chance and he bowled pretty well. Amol on strike. A half volley nicely driven downtown. That single takes the score to 58. One final ball to come in this 9th over. That's the end of the over, end of 9 overs, 58 for 4. गेंदबाजी का भार संभाली हुए अमरकांत जैन, स्वयं कप्तान, अब गेंदबाजी करेंगे फार एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर उनके काउंटर पार्ट अमोल पोलके। वाइड के साथ अपने इस दूसरे स्पेल को शुरू किया हैप्पी ने। ज्यादातर काफी सटीक गेंदबाजी करते, बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी, और इसी तरह की अच्छी गेंदबाजी के लिए उन्हें ख्याति प्राप्त है। अच्छी गेंद, थोड़ा सा पिछली खेला और दूसरा रन लेना चाहते, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। दाद देनी होगी सुशील की। अब पिछली खेला है, भाग्यशाली रहे वहां पर अमोल। बहुत ही मुश्किल चांस था, बल्कि मैं कहूंगा कि ये मौका ही नहीं था। बहुत ही लंबा वो गेंद गिरी वहां पर, काफी दूर थे फील्डर, लेकिन कुछ समय तक दिल हलक में रहा होगा अमोल का। भाग्यशाली रहे, नो मैंस लैंड में आखिर में गेंद गिरी 1 रन के साथ 62 रनों पर। वहां पर संकेत देते हुए अंपायर के आउटसाइड दी लेग स्टंप थी वो गेंद। इट वाज ऑफ द बैट। बेहतरीन तरीके से केवल दिशा दी वहां पर अमोल ने, बिल्कुल एक एफर्टलेस शॉट। देखिए अब रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे आ चुकी है, अब 5.81।
अब तक अमोल पोलके ने 10 गेंदों का सामना किया है अपने 12 रनों के लिए। दूसरी तरफ 8 गेंदों का सामना करते हुए सुशील ने 13 रन्स बनाए हैं। पूरा दारोमदार इस बैटिंग जोड़ी पर। दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके और एक सकारात्मक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त खेलते हुए, गेंदबाजी करते हुए हैप्पी उस विकेट की खोज में फार एंड की तरफ से। लो फुल टॉस, बेहतरीन टाइमिंग और एक एफर्टलेस शॉट। थोड़े से महंगे साबित होते हुए हैप्पी इस ओवर में। बढ़िया बैटिंग। ये क्लास है अमोल पोलके का, ये टेम्परामेंट है अमोल पोलके का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अपने पहले 5 गेंदों में 13 रन्स दे चुके हैं अब तक हैप्पी। थोड़े से महंगे। बहुत ही खतरनाक शॉट खेला था कौशिक मेहता, मिस कर रहे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल चुकी है और एक चौका। 17 रन से दिए हैप्पी ने अपने उस ओवर में। लेकिन जिस तरह का शॉट अमोल ने खेला था, खतरनाक साबित हो सकता था। कयामत को न्योता देने जैसा था। भाग्यशाली रहे। 4 ओवर 4 विकेट्स खोकर 75 रन्स बनाए हैं टीम ब्लास्टर्स ने। 10 ओवर के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 5.20। करंट रन रेट 7.5। बेहतरीन पार्टनरशिप, एक अच्छी साझेदारी इस वक्त पनपती हुई। साठ गेंदों में 52 रनों की दरकार और बहुत ही क्लिनिकली अब टीम ब्लास्टर्स इस लक्ष्य को तय करने की जद्दोजहद करती हुई। दोनों बल्लेबाज काफी आत्मविश्वास के साथ इस साझेदारी को और भी आगे बढ़ाते हुए, विशेष रूप में जब से सुशील पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, लगातार रन्स आए हैं। बहुत ही कम डॉट गेंद देखने को मिली है। अब बिल्कुल अपने अव्वल दर्जे के गेंदबाजों को बॉलिंग अटैक में इंट्रोड्यूस करना होगा। हैप्पी को विकेट्स लेनी होगी। एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, विकेट्स लेना। अब आस्किंग रन रेट तो केवल 5.20 का है। ऐसे हालात में इस मैच में बने रहने के लिए 2 विकेट्स बहुत ही जल्द लेने होंगे, यानी कि जोड़ी में विकेट्स लेने होंगे। और जब आपको विकेट्स की जरूरत होती है तो आप गेंद आपके सबसे श्रेष्ठ गेंदबाज को गेंद थमाते हो। गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अब बाबा गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर सुशील पाटिल, आइकॉन प्लेयर नंबर 1। ये उनका बिल्कुल फेवरेट शॉट है। मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही बेहतरीन खेलते, और जब स्ट्राइक पर होता है सुशील पाटिल को तो आपका बेस्ट फील्डर डीप पॉइंट पे होना बिल्कुल अनिवार्य होता है। बहुत ही स्ट्रांग है उस एरिया में। गत 4 गेंदों में 4 चौके लगे हैं।
अच्छी गेंद, ये लेंथ बहुत ही ज्यादा सही है क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट पाटिल इतने स्ट्रांग है, उस वजह से आपको उनको रूम नहीं देना है, उनको आगे खिलाना चाहिए। 80 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस इनिंग्स का 11वां ओवर इस वक्त मुकम्मल। गेंदबाजी करते हुए बाबा, स्ट्राइक पर अमोल। अच्छा ड्राइव, थोड़ा सा अपने आप को रोका एन वक्त पर, गेंद की लंबाई को खींचा था बाबा ने, देखा कि स्टेप आउट कर गए थे अमोल, गेंद की लंबाई को थोड़ा सा खींचा, आखिरी वक्त पर अपने आप को रोका, रुक कर शॉट खेला, अच्छी बैटिंग, 1 रन की बढ़त, रन संख्या 81 रनों पर। और फिर से एक बार सुशील पाटिल स्ट्राइक पर। सुशील ने अब तक 10 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। अच्छी टाइमिंग, गेंद लगी है वहां पर, नी पे लगी। अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, ये अच्छी लेंथ थी बाबा की। बाबा के इस ओवर की अब आखिरी गेंद आनी बाकी, इस वक्त रन संख्या 84 रन 4 विकेट के नुकसान पे, स्ट्राइक पर अमोल। रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे, अब 4.69। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा चिकी शॉट खेलने का प्रयास किया था, काफी लेट खेले थे वहां पर, मिस कर गए, गेंद के बल्ले को घुमाया था। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस मैच को जीतने के लिए 54 गेंदों में अब केवल और 43 रन्स बनाने हैं। 43 to win of 54 balls with 6 wickets in hand. Yes, the only way that team Gangsters can make a comeback in this match is to take a couple of quick wickets. That's the only way. So here team Gangsters will have to show some stomach for fight. Their body language really needs to go that much up. Somebody needs to lift the morale of the team. It's going to be Vaibhav from the commentary box, and the man on strikes going to be Sushil Patil, the well-set man. 53 runs to win of 54 balls. Once again, a big thank you to all the viewers connected with us on YouTube and Facebook. Big thank you for making your presence felt and watching the GSC45 plus T20 League. Hopefully you all are being entertained with some good cricket. This tournament will go on till the 8th of May, wherein we play the grand finale. A total of 24 matches to be played. This is the 5th match of this league. Vaibhav bowling to Patil. A stifled appeal, not just a stifled appeal, it was a slightly belated appeal, but a good delivery first up. The man with the golden arm, Vaibhav. Nicely worked away towards the short covers region.
Single easily accomplished. With that single, the score on 285. The man on strike now, Amol facing Vaibhav. Yes, the team Gangsters will have to produce some magic here. They have to create a situation. They have to make things happen. They'll have to come up with an extraordinary effort now. Nicely timed, happy in pursuit, will not get there. The ball wins the race. So well timed by Amol. That was a half volley, nicely taken toll of. With that boundary, the score for team Blasters now on to 89. This is a fabulous partnership being stitched between Polke and Patil. Wanting to cut it away, got into a good position to essay that square cut, but not able to put back to ball. Score remains steady on 89. 50 balls and 38 runs to win the match. This is good batting. Maybe they could go for that second. We'll have to wait and watch. This is brilliant cricket. This is absolutely brilliant running between the wickets. Wow, this is such a positive brand of cricket that both these players are playing now. Very clinical in their batting approach. They are going about their business with so much of ease. At no stage in this match, either of these two batsmen have looked to be in trouble. They have been so cool and composed at all times. Well bowled and well played. Score at the end of 12 overs, 91 for 4. Now 36 runs to win of 48 balls with 6 wickets in hand. Yes, in the driver's seat, dominating the proceedings at this point in time, team Blasters, no doubt about it. As I mentioned earlier, team Gangsters will have to produce some magic here to stay in the match. They need a couple of moments of pure magic. Yes, if this match is won by team Blasters, this becomes even a more competitive tournament. The points table then really becomes more wide open if Vijay Singh to Patil. Icon player number 1. Bowling to his counterpart. Icon player number 1 for the batting team. So 2 top players up against each other. It's been a fantastic batting effort for the second time in this tournament. The consecutive time that has come out and batted brilliantly for the team. So definitely living up to the billing of the number 1 icon player in grand style here, Sushil Patil, and is going about his business in such a cool and composed way. Not such an expressive player, hardly plays any dot balls, plays the bowling on merit, reads the match situation so well. One run in the form of a byes, 92 for 4.
35 to win of 47 balls. Very wideish. The shoulders have dropped for team Gangsters. Somebody needs to lift the morale. It's still not a totally lost cause. They can still bounce back into the match. There was a good piece of wicket keeping there by Gaurang. He tried to play a half scoop shot. That was almost a premeditated shot. Got into a good position as well to play that scoop shot. And nicely struck. Good piece of fielding by Happy. Brilliant fielding. Well timed. That was a chip shot. Amol has faced 20 balls for his 28 runs and Sushil has faced 15 balls for his 21. So enough balls left in the quota of both these batsmen to take their team to the victory post. Down the leg side, Mayura was the only one on the ground to appeal. Nobody else. So yes, they'll have to, as I mentioned earlier, produce some magic here. The shoulders are dropping. The body language seems to be down. Almost looks like they have surrendered. Nicely driven to the wide-ish mid-off region. A slight misfield by Baba, resulting in one extra run being taken. The score now on to 97, 30 runs to win of 44 balls. चवालीस गेंदों में अब 30 रनों की दरकार. दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं और बड़ी आसान तरीके से अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए.
Nicely turned away around the corner, well placed. He is a very confident looking man, a brilliant piece of fielding. Superb stop, well fielded. Hundred runs up on the board, and now 42 balls and 26 runs to win the match. We need to contain the drinks that are going onto the ground after almost every over. Thank you. Vicky bhai, thank you. It's going to be as it is, drinks after this over. बेहतर इन शॉट, थोड़ी सी लूज गेंद, बिल्कुल प्रहार किया, सही दिशा में उस गेंद को पहुंचाया ने अमोल बिल्कुल सेट हो चुके. ही इज लिटरली टॉइंग विद द बॉलिंग अटैक ऑफ टीम गैंगस्टर्स एट दिस स्टेज. Each and every loose delivery is being taken care of in good style here by both these batsmen. Super batting, very good batting. And if Amol comes back to the pavilion unbeaten, that will take his confidence even more high. Sushil has played just 17 balls and Amol has played 23 balls. Mighty impressed with the batting of Sushil Patil. For the second consecutive time, he's come good as a batsman. Very well bowled. Just 20 more to win now. केवल 20 रनों की दरकार, अब 39 गेंदों में बिल्कुल एक आसान सा लक्ष्य. 6 विकेट्स हाथों में. देखिए किस तरह से ये दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच की सिचुएशन को
भापा है और उसी अनुसार अपनी गेम को एक बेहतरीन ढांचे में सजाया संवारा और बिल्कुल अपनी टीम को अब जीत की कगार पर ले जाते हुए केवल और 19 रनों की दरकार। Now this is becoming so easy for team Blasters. Just going through the formalities. Nothing happening at this stage. It is drinks time. The score at the end of 14 overs, 110 for 4, 17 balls and 36 balls and 17 runs to win the match. 6 wickets in hand. The required run rate 2.83. चलिए वेलकम बैक। अब केवल और 17 रनों की दरकार। 36 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से अपनी टीम को बिल्कुल जीत के कगार पर
ले जा चुके हैं सुशील पाटिल और कप्तान अमोल पोलके। गौरांग कराकास्य अब गेंदबाजी करेंगे, विकेट कीपर। एक रन का इजाफा, रन संख्या 111 रनों पर अब और केवल 16 रनों की जरूरत 35 गेंदों में। Well played. That inside out shot. A couple easily taken. The man in the deep, Vaibhav. 2 runs added. With that couple, the score on 213. Now just 14 more to win. Well and truly on their way towards a very well-deserved victory here. That will be a morale booster here for Team Blasters. That was such a good effort by Vijay Singh. 95% of the execution was perfect. A single added takes the score to 114. The man on strike, Sushil, who's played a brilliant innings. Sushil is the kind of batsman who will not play any dot balls. Very rare. I mean, if he faces 25, 30 balls, there will be there will not be more than 2 dot balls in his innings. Is that good at rotating the strike? A very busy batsman. He's got some good wrist. Fortunately for Amol, the ball falling in no man's land. Good running between the wickets by Sushil. Sushil is a brilliant runner between the wickets. What a player Sushil is. Proving his worth. He is the marquee player #1 for his team, and this is the second brilliant outing for him in this tournament. The second match, both the matches have been good for him. In good form. Score at the end of 15 overs, 117 for 4. 10 runs to win off 30 balls. Definitely looks like the writing is on the wall. केवल औपचारिकता बाकी इस वक्त ऐसा नजर आता हुआ. देखना है कि अब इस तरह की टाइट सिचुएशन में
किसे गेंद देते हैं अमरकांत? Okay. So Amol has played 29 balls, just 7 more to come in this innings of Amol. On the other hand, Sushil has played 22 balls. Amol is on. Yes, 21 balls because they are not switched. Yes, quite right, Vicky bhai. And Amol is on to 41, so he needs 9 runs to accomplish his half century. Amol is on to 42 runs of 29 balls, just 8 more to accomplish his half century. Seven balls to go and 8 runs to accomplish if Amol has to get to his half century. Web to bowl from the far end, the man on strike, the very well set Sushil Patil, marquee player number 1. 10 runs to win of 30 balls, 6 wickets in hand, the writing on the wall. There's only one team that can win this match from here on, and it's definitely going to be Blasters. They'll be more than happy with this well-deserved win. This win by Blasters takes the points table. It makes it more wide open. It becomes more competitive now. Starts off with a wide ball. I'm sure Sushil will be looking to take that single and give the strike back to the captain so that he can try and get to his half century. Very well bowled. Yes, caught in 2 minds. Yeah, this is a very rare sight. 3 dot balls played by Patil. Very rare to be seen. 2 dot balls. One was a wide. टर्न कर दिया है, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं. 4 रन्स मिले चौके के साथ. रन संख्या अब 122 रनों पर. केवल और 5 रनों की जरूरत 27 गेंदों में. तो चले, क्योंकि अब केवल 5 ही रन्स की जरूरत है, तो अमोल पोल की अब हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाएगा.
What a shot! High and handsome, superbly timed, just what the doctor ordered. Congratulations to Team Blasters for winning this match, hands down. And that pump of fist in the air by Sushil Patil says it all. What a partnership, brilliant partnership. Goodness me, what a clinical chase. Congratulations to Team Blasters. Hello. Yes, good evening, and may I now request both the teams to please get in front of the stage. Pramod bhai, can you please get your team here? Team Blasters and Team Dharmin Parekh bhai, please in front of the stage before you. Can your team please come here? Yeah, please. Thank you. Kaushik bhai. Yes, may I request KK Jain Saab to please come up on stage. Manish bhai Sharma, Vicky bhai Mehta, Hemant bhai Moite, Jivan bhai Rai, Ravi bhai Sahu, Subbu bhai and Rakesh bhai Suvarna alongside Karan Singh Walia ji. Yes, once again, may I request all the guests to please come up on stage. As always, founder member KK Jain sir, Manish bhai Sharma, Vicky bhai Mehta, Hemant Moite, Jivan Rai, Ravi Sahu, Subbu bhai and Rakesh Suvarna. All you guys are requested to please come up on stage for the ceremonials of the prize distribution function. Welcome, gentlemen. Yes. Yes, good evening and congratulations to Team Blasters for winning this match in such convincing fashion. Jivan Rai sir, Jivan bhai, can you please step on the stage? Yes, straight away I'll request Happy to please come up on stage. Yes, we have with us the captain of the losing team, one win and one loss for Happy. Happy in definitely you all were 20 runs short, and the kind of partnership of 87 runs by Polke and Patil really clinched the match for them. Definitely. Congratulations to Team Blasters. Amazing display. Patil and Amol were really good. It all started with Gautam in the first place. He was really in the attacking mode. We also started very well. Shailesh was a surprise package for us. Chota packet, bada dhamaka. So he batted very well. Prasad batted very well. So the positives, although we've lost the match, the pluses from this match is that Prasad came out good. Shailesh came out good. Okay, yeah, we also need to learn that bowling second is not going to be easy. And we saw the ball was actually ruptured. We had to change the ball in the mid-innings. But that's no excuse. They really played well. We need to work on our fielding more. I need to take more responsibility with the bat and the ball both. I was not up to the mark today. Yeah, that's about it. Thank you. Happy and well said indeed. Words of wisdom from Happy. And now to step on the dais, a proud captain Amol. Congratulations. Warm round of applause for Amol.
Amol, that was a fantastic day in office. Right from the time you won the toss and elected to field first, everything went absolutely correct for you. And today, this win makes the points table go even more wide open, and this is even more competitive now. Absolutely. So first of all, congratulations to Blasters for thumping win. And very well played, Happy and team. Good fight. So after the first loss, we were not very much in the best of the moods, but we stood together. We wanted to win this match desperately. And hats off to all the teammates. They were putting more than 100%. We could see that, and that's the result, I think. So everyone played fantastic over here. Your marquee player number 1, Sushil, is delivering the goods in great style. I need not say anything about my marquee players. So that's the reason they are called as marquee. Sushil Patil, whenever he comes on the ground, I think so. We are expecting every time he is performing. I think so. That's the best part. Dinesh Yadav, Sushil Patil, Gautam. I think so. Everyone is standing up and taking their the responsibilities on their shoulders as always. I think so. That's the best part. Thank you, congratulations and well played, and wishing you the best for the remainder of the tournament. And now to hand over the Man of the Match award, I'll request Subbu Bhai to please do the honors and to collect the award in spite of a couple of brilliant batting performances. It will be the man with the golden arm who picked up a fifer. It's going to be Dinesh Yadav. Yes, indeed, I doubt whether anybody will better this analysis in this whole tournament. I bet that nobody can. Kya baat hai? Yes, collecting the Man of the Match award. Congratulations, a warm round of applause. दिनेश भाई, आपने जाल बिछाया और 5 विकेट्स लिए और शायद पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल में आपके एनालिसिस को कोई बेटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है. जबरदस्त गेंदबाजी and you must be a happy man. Nothing tastes sweeter than a victory, not even a fifer. And when you see we lost the first match, we desperately needed this. After losing the first match, I could not sleep the whole night. That's a fact. It was hurting me day in, day out. So today was a day we all performed, and the best part was all the guns fired. And when all the guns fire, so this is the result. Thank you so much. Yes, thank you, and indeed, well bowled, well played, well said as well. And we have a 2 days break, and we will let you know about the future match, right? Everything will be conveyed to the members, and not saying anything for now. Yes, thank you. Good night once again. Thank you to all the supporters for making their presence felt, and we meet after. दिशा में उस बाउंसर को किया था ऑफ द विकेट. काफी अच्छा परचेज मिलता हुआ देखे किस तरह से गेंद कैरी होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई. एक अच्छी कॉन्फिडेंस